of Goa, University of Goa. She is a renowned, sorry, she is a renowned speaker and a faculty member from the MMTTCs, and she is instrumentally engaged to execute, design, and oversee the hundreds of orientation, faculty induction, refresher courses, and the short-term programs and skill development program. Particularly, this also that is the NEP orientation and the sensitization program. Friends, she has also been instrumentally engaged with the different institutional committees and the academic assignments at the Goa University. She is also associated with the different professional bodies at the across country and the different institutions of the HER. She has the numerous article on his credit that has been published in the reputed national as well as the international journal. So friends, this is the brief introduction with regards to Ingrid ma'am. I can tell many more things with regards to Ingrid ma'am, but without taking too much time, ma'am, I once again extend my warm welcome on behalf of all these team gathering here. And now may I request you to please start with the session. Ma'am, please. Thank you so much. And I wish to thank the director of Sant Kartike Baba Amravati University for giving me this opportunity, Professor Atik, to deliver the session to this esteemed university. Thank you so much for giving me the opportunity, and just allow me to share my screen. Just a minute. I hope my slides are visible. Ma'am, it's sharing, ma'am. Yes. Yes, now it is visible. Now it's visible, yes. Okay, so I'll be dealing with one of the themes known as academic leadership, governance, and management. And there are many sub-themes, that is academic leadership, institutional development plan, and management and governance. I'll be dealing with the institutional development plan. So academic leadership, governance, management. So academic leadership is critical for an institute to deliver on its mandate. The leadership drives key initiatives and mechanisms for performance excellence of any institution. So leadership is very important for an institute. One has a good leader, one can do a lot of things under the leadership. Okay, so an administrator or an academic leader can create conditions that can either make or break the institute. So we have, if it's a good decision taking, then it can make the institution even better. But one wrong decision taken, then it could even break the institute. One wrong decision and it could even collapse. And that's what it means. For effective decision making and exhibiting leadership skill, it's crucial to gain training and enhance one's capacity. It's also a good thing to correlate with your team members to know exactly what is the requirement, and then taking the feedback, one can also make a good decision. Governance and management are both related to administrative changes as well as overall institutional development. Hence, equipping with the leadership with the right attitude, skill, and knowledge becomes pertinent. So, this is known as the governance and management part of it. Institutional development plan. You have normally a roadmap for planning the vision, mission, and goals of an institute in alignment with the national education policy. So the way exactly you want to reach the final vision, you have the mission plan in between to know exactly how you are going to reach over there. So when they say it will guide the governing bodies of an institute to devise immediate goals and as well as envision what's going to happen in next years of the institute. So when we say immediate goals, what you're going to take right now, what steps you're going to do right now, what problems you're going to solve right now. And when they say next years of an institute, they mean to say next 10 to 15 years, what's going to happen in the long run, what you're going to see yourself in the next 10 to 15 years. So that's your vision point of it. And whatever steps you're going to take, whatever problems you're going to solve, will reach that particular vision. Okay, so guide for a key work area for the force on the higher education institute will be either in a short-term basis, a mid-term basis, or a long-term basis. So we say short-term basis, we're talking about the next
2 to 3 years, 3 to 5 years, within 5 years or so. Midterm basis is 5 to 7 years, 5 to 10 years. Okay. Long-term basis is more than 10 years. So going on further than that. So the directive is at its fulcrum of its achievement of successful parameters for an institute. So what do these new guidelines propose? Before we come to this point over here, the former chairperson, Professor Jagdish Kumar, in 2023, when this had started, that was on the 25th of July, 2023, there was this University Grants Commission that had the guidelines to form all these institutional development plans. So this was also for the faculty as well as for the students. So in an interview, he mentioned it outlines the long-term vision, mission, objectives, and the strategies and the actions as well to achieve the goals. By adopting these IDP, the Higher Education Institute can achieve the functioning, the growth, the sustainability, since it provides for a roadmap for success and improves the resource management and also fosters a culture of accountability and continuous improvement. So as you go on accumulating more and more of these aspects, you can improve. The institution will improve. So having a good planning system, one can better develop its institute. Okay. So what do these new guidelines actually propose? As we have the higher education governing bodies in facilitating wide transformation in the teaching learning methods, we have these guidelines which can attempt to enhance the academia, not even in the teaching, but also in the research standards. So we have the first one as physical restructuring of the campus. So according to the graphs, you have to have infrastructure improvements. So your infrastructure has to have the requirements that we'll be discussing in the future slides. And it has to have an effective communication between the academia, between research, outreach, cultural programs, operational activities. So you have to have a good basis in everything, not just only learning, teaching, research also, and other cultural activities also. Emphasis should also be on the artistic expression, originality, creativity, okay? And also, besides education and maybe extracurricular activities, one should also concentrate on the healthcare. So you have to only think of the physical healthcare, but also on the mental health care. Okay. Second thing is the shift to digital methods. So instead of sticking to only manual methods, now the in is to get into digital infrastructure, in digital methods. So the draft claims that many benefits are used for the learning methods and improving communication, transparency, and quicker decision making. We can have the higher education institutes embracing now ICT plans, virtual technology, learning and teaching also towards digital universities. So instead of sticking with only manual, you will now think ahead in digital terms. Seeking external funding. So what are the ways of getting the external funding? We have the higher education institutes to identify and also prioritize the funding sources, exactly from where you will get the source of income, from where you will get the money from, including now government grants. So when you write a project or so, you can ask for money. So that's one source of income where you can get it. You can contact your alumni, the past students, and you can ask for donations. So the alumni donations are possible. You can write a patent and you can patronize it. So then you can get royalties on it. So that's a third way of doing it. Private sector partnerships. You can have a partnership with the private sector. Fourth way of getting it. So there are many ways in how you can get external funding. Okay. So it also encourages the government and the private institutes also to have a sustainable revenue system such that even from tuition fees also you could get it, or some other sponsored projects and any endowments, any intellectual properties, you can try to get the funding. Last one is the realignment of the existing curricula. So exactly you will check out to see what is the existing curricula and how you realign it with the NEP. So you will check it out not just with the NEP, also with the National Credit Framework, with the National Higher Education Qualification Framework, with the Skill Qualification Network, with the training capacity building and faculty development. So you don't have to only be happy with what you know right now. You also have to try to improve yourself by having a yearning for lifelong learning. So learning, you can upskill what you know, you can reskill what you have forgotten, or you can also learn a new skill.
Okay. So overall, you have this IDP planned by the university. It can be beneficial for everybody and it will pave a way for the roadmap to success. Okay. We have key elements of a good IDP vision and mission. So the first thing for the vision and mission, when you're thinking of how you're going to describe and what you're going to do with your vision and what you're going to get your mission to be, it has to be clear and concise. When we say clear, everyone should understand exactly what you want it to be. Okay. To be clear, you have to use simple language. Simple language, concise, it has to be short. So everybody can remember what you have said. Okay, so in your vision statement, it has to be a very short statement. It has to be memorable that everyone can remember it and use simple language. Second thing, it has to be ambitious. It has to be inspiring. Everyone should be a part of it and everyone should want to be a part of it without anyone forcing you to be a part of it. So that will be good if you have a feedback from everyone and everyone could put in their point also to say exactly what should be done and everyone will have that satisfaction of being a part of it. It should be measurable and achievable. So when we say measurable, it should be able to be quantified to know exactly how much you have done, how much is yet to go in maybe percentage wise, in maybe in a rubric wise. You can actually measure how much is done in your objectives, in the mission, in the targets, whatever is required. You can actually count to see how much is over, how much is yet to go, what problems are solved, what problems are yet to happen, or what can be done in order to reach your vision. Achievable. When you always choose your vision statement, you have to know that exactly what is has to be not imaginary or unrealistic. It shouldn't be something that which cannot be reached. It has to be achieved. It should be possible to be completed. Okay, so it has to be achievable. It has to be aligned with your institutional values. Of course, all institutions have good moral values, good ethics, and one should also align this particular vision and mission to be in alignment with your institutional's values. So when we come to institution development plan under 2020, we have to have a strategic blueprint to align the higher education institutes with the NEP 2020 goals. Okay, so exactly what the goals are, what is there, it has to align with it. It also has to focus on the governance, quality, innovation, inclusivity. So this is a part of all our NEP 2020's guidelines. It has to emphasize on autonomy, accountability, and flexibility too. This is what the multidisciplinary institution in the future would look like, having an NEP based IDP done. Okay, so can anyone tell me what looks different, or is your institute looking something like this, or are you all in lines with something like this? Do you think this is something that we should go for? Anyone? Participants? Say, am I audible? Yes. Yes. Could anyone tell me what can you say about this picture? No? It is an interdisciplinary institute. Okay. Student-centric. It is Student-centric. student The centric. design, the architecture will be student-centric, looks like. Okay. Looks like a university where all the courses are available.
Okay. And students are not sitting in the classes. Okay, we have this as a multidisciplinary institutes. We have variety of different disciplines around the campus. If you all must have noticed, it's a green campus. There are no vehicles inside. That's why students have to walk from one place to the other, because it's environment friendly. They're using bicycles. The cars all are parked on the outskirts of the campus. Okay, it's a green university and has many institutes. The central portion over here we have is the administrative building. Okay, and different disciplines around it. It has thousands and thousands of students. That's why you can see only a few hundreds outside, and they are using the walkways, or they can use bicycles to go from one building to the other for their different disciplines. Okay. So we have the institutional restructuring and consolidation. Yes, thank you for your responses. The main thrust of this policy is to now attract and have more than 3,000 students at a particular higher education institute. So this can be done if you have multidisciplines. When you have multiple disciplines, the students can choose any possibilities of having the combinations, so that they can choose what they are interested in actually, and then they'll be actually interested to come for the lectures and come up with their particular degrees. Okay, so this has to be an all-rounded discipline, not just only academics. Also, you can even have, other than that, you can have some extracurricular activities also, so that they can build up their creativity, their artistic way. Any other sports subjects also, any research communities that can they do in a cross-disciplinary, instead of just sticking with one discipline, they can have an interdisciplinary project also. So you don't have to stick with just one discipline when you're doing your dissertation. You can have an interdisciplinary way. Okay. Moving to the large multidisciplinary institutes, we have to have clusters, and you have to have the multidisciplinary in nature, so that we can have a large number of students. So in the ancient universities like Takshashila or Nalanda or Vikramshila, there were thousands and thousands of students who were doing, and they had great success in the multidisciplinary research teaching, which we can also now bring nowadays by creating well-rounded students having different types of disciplines. Okay, so our country will then go up educationally and economically too. So this vision of having higher education institutes for universities or colleges, you can have a university which could have multidisciplinary institutes of higher learning in undergraduate as well as graduate level, in not only teaching but also in research and also community engagement. So when we have research intensive universities, or we have teaching intensive universities, it doesn't mean that it's only research intensive, means only dealing with research only. No, it has more of research and less of teaching. When we have a teaching intensive university, it's more on teaching and less on research. And of course, whenever required, they can always switch over. Also, you have the autonomous colleges, which also have large multidisciplinary institutes with learning guidelines of undergraduate degrees, and it also focuses on undergraduate teaching. But it does not have to be restricted to that, and they could also come up into a typically university which could also lead to either a teaching intensive or a research intensive. Colleges also should be encouraged to be supported in these benchmarks. Get the benchmarks, the minimum benchmarks you can get, and then of course you can also get into and become a mini university or even a proper university of either. You can have the teaching intensive or the research intensive. Anyone had a query? GM Prasad, sir? सर्टिफिकेट जनरेट होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चल रही हम डेली कल भी भूल गए थे 1 घंटा के लिए आज सोते Requesting the admin to please mute our participant. अब देखिए this set partial order relation defined इस सेट पर partial order relation Okay, thank you.
So it also must be clearly stated that these three broad institutions are not in any natural way rigid. You can also shift from one to the other. Okay. So once you have the accreditation system which develops and you can have the different types of relevant norms, you can also have this teaching learning process across all the higher educations and it can be the same. In addition to this also, you can also support other higher education institutes, the faculty's development and also to support school education too. Okay. So by 2040, what is all higher educations aiming to do? They're aiming to become multidisciplinary institutes with a large number of students of in thousands, 3,000 or more students as their enrollment. And since this is a long, far-fetched thing right now, at 2030, that's in another 4 years' time, we're aiming at least to make it multidisciplinary education systems. Once it becomes multidisciplinary in nature, then it will be easier to attract more and more students so that we will have the desired number of students by 2040. So in around in and close to every district, we will have one large multidisciplinary higher education system which will exist, and the gross enrollment ratio in this case would increase from what was there in 2018 of 26.3% to 50% in 2035. So while new institutions are developing these goals, we are also trying to expand and improve the existing higher education institutes. So the growth will be not just in the public institutions, but also in the private institutions. And there'll be a strong emphasis on developing what the outstanding public institutions are also. So there's a fair and a transparent system for increased level of public funding. And this will have equal opportunity for all the public institutes to grow and develop. So higher education is laying down these rules and trying to expand their capacity. So in this case, we also have open distant learning. So online programs are happening so that everyone can expand what they already know and then reskill and upskill on what they have. This will increase the GR ratio and also have a lifelong learning in the sustainable development goal number 4. So in this case, this could lead to a diploma or even a degree level of the standards and the qualities that are required. Top institutions also will be encouraged to develop this high quality online courses. Something that you have like a single stream higher education system will be phased out in time because you'll always have now a multidisciplinary education system. So you'll never have something of a single stream saying this is only commerce, only science, only arts, only vocational. It'll be a mixture of everything. Okay. So you can have different amount of departments, different fields, different combinations that you can get and have high quality education. Something that you have affiliated colleges, something like this college is affiliated to a particular university will be phased out because you'll start be having the autonomous colleges, and once you get the benchmarks what is required, they will start their own autonomous colleges without being affiliated to anything. So the policy and the approach also would be merging in from one ecosystem into a higher education system. And something that you have like deemed to be university, affiliating technical university, unitary university, all these terms, different terms will be phased out and be replaced by just the word university. Because we are now planning on having teaching intensive and research intensive universities. Okay. Anyone can tell me what the foundation pillars of NEP 2020 are? Participants? Participants, are you here with me? Foundation pillars of NEP 2020. I have at least around 48 or so participants here online with me. Requesting participants, please turn on your cameras. Yes. Abhilash Kumar. Quality education.
Could you repeat that again? Quality education, one of the features. Quality education. Okay. You're muting yourself too fast. Multidisciplinary education. Okay, next one. We have 5 pillars. Access to each and every student. Okay, let's go by one with it first. We have access, as you have mentioned clearly over here. So every student has to have access to education. Access means you have to have that possibility of gaining education. So you have to try to get access to it. Accessibility to higher education system would be beneficial. So that is a foundation pillar of NEP 2020. Next is equity. So when we say equity, we don't mean to say it is equality. Okay, so equity is just saying it's fair. The system is fair. It's not the same for everybody. So when you say equality, you give everybody the same basic education and you say, okay, go answer, or this is your paper and that's it. When you say it's fair, that means when you have someone who cannot do it or so, you try to give them extra classes, you try to get them to be equal to the other students to get the benchmark up such that everyone can get the same access to the opportunity of doing well at the examination, to get the possibility of getting a degree. Instead of just going on repeating the classes also, you are being fair. So having equity as a foundation pillar is very important. Quality, of course, one has to have quality education. Quality, as one of our participants has mentioned, you have to have not just quality in education in matter, but it has to be also in infrastructure, in the facility, in the mentoring, in the peer learning. The quality has to be everywhere. Okay. Then we have affordability. The education has to be affordable by everybody. Those who cannot afford also, somehow it has to be made possible such that the student can learn, even if it is through some scholarship or just through some earn value learn program or just through some any other means. The education has to be afforded by the student. Okay, it has to be made affordable at minimum costs or so. Last one you have is accountability. So it has to be accountable to all the stakeholders, not just the students, but also the teachers, the parents, the non-teaching staff, everybody. So everyone has to be accountable for the particular education. So these are your 5 different pillars of the NEP 2020 in education system: access, equity, quality, affordability, and accountability. Okay. So the key areas of focus in the IDP implementation you have is the infrastructure and the digital transformation. The faculty has to be developed. The learning process has to go on. The realignment of the curriculum, as I mentioned, has to be in lines with what is happening nowadays. It cannot be something which is old or so. It has to be in industry point of view, in job point of view. You have to realign your curriculum. Industry and community partnerships. In order to gain your seeking external funding, you have to have a partnership with an industry or a community or private institution. Government reforms also. Okay. So right now we have 57 central universities, 521 state universities, 157 deemed to be universities, 558 state private universities, and 1,788 autonomous colleges. So this is the international institutional framework of the universities that is happening nowadays as per the UGC's website. Okay. So you have the institutional autonomy and accountability. You have to have a strong governance and participatory decisions that have to be taken so that you can have your good vision has to be achieved. Okay, so quality enhancement via the accreditation and ranking, so that you have a good ranking, you can also then improve on your teaching research process also.
Lifelong learning ecosystems, you have your online learning so that you can always betterment yourself. Academic council, this is the organizational design of the higher education systems. You have to have an academic council which would deal with the curriculum and the assessments, a board of governors to see the strategic vision and the funding, the research and innovation councils, the student development cells, and you have various number of councils also and cells also in a education system. So these were the different types of the institutes that you would have in the future: a research intensive university, a teaching intensive university, autonomous colleges, and besides also you have the professional higher education systems. Okay, so the UGC deals with the funding, coordination, the standard qualities. The ICT deals with the technical education regulations. Other agencies also exist of teacher education, the agriculture education, the medical education, and also the sector-specific agencies also. The state level institutes have the following. You have the state accreditation bodies, the university syndicates or the senates, linkages with the national agencies, and also the state higher education councils. Okay, so these are reporting to the UGC and as well as the AICTs. The quality framework in higher education system would be focusing on outcome-based education, competency-based curriculum, innovation and skill integration, and also have global collaborations. The setting industry would have the model curriculum, the credit framework, the technical standards, and also the sector-specific standards. We have different bodies which have accreditation, like our NAC, who has on institutional assessment and grading. The NBA deals with the program-specific accreditation. Ranking frameworks, we have the National Institution Ranking Framework dealing with the teaching, learning, research, outreach, perception. We also have the THE, the QS, and the Shanghai. The world-class universities and NP vision, we have the multidisciplinary research excellence, global collaboration, flexible curricula, and lifelong learning opportunities. So this would deal with all online programs like you have Coursera, Swayam, NDL, I Got Karma Yogi. So you can always skill yourself, you can upskill what you know, you can reskill what you know, upskill on what you have basics in right now. And you can also stack your credits and also transfer your credits accordingly. Okay. So the main objectives and the goals that have to be achieved by IDP articulate with a clear vision mission, which will align with the NP 2020 and NCRF, SDGs, and the research activities and the social objectives. Also, you need to have this as a wide consultation process so that you can also see what the others also feel about it. It also identifies capacity, organizational gaps based on the goals and the priorities, and develops annual activities to build capacity and remove the gaps. So whatever was not existing between two things that you have is a gap. So you have to remove the gaps such that you minimize the gaps and then you have everything done together. It should also be transparent and have a holistic, inclusive growth to develop into the digital technologies. Okay, so you have an overall balanced growth also here. Have a lifelong learning process, have employability, entrepreneurship, and by skilling into higher education. Okay, so we are coming into more details about these main objectives in the future slides. You have also to develop a framework with potential equivalence for exchange of students and faculty, to have the stakeholders develop in implementation of the IDP. The goals have to be time-bound, targeted, and also take periodic reviews, that is your feedback, to improve and correct what you have done and also to have further improvements. So this brings us to the IDP framework. These are the major components. We have the institutional development plan, which will deal with governance enablers, financial enablers, and funding models. You have the academic enablers, the research and intellectual property enabler, the human resource and supportive facilitative enabler, the network and collaboration enablers, the physical enablers, and the digital enablers. Okay. So we're coming to the first one, that is the governance enabler. So over here you have the board of governors, the senate or the syndicate. So this has to be majorly staffed and has to be of full strength for it to
exist, and you have to have specific roles and responsibilities given to everybody, such that everybody is responsible for what they have undertaken. Okay, and this would be a major stakeholder for this particular one. It also has to have a quality assurance. When you have a quality assurance, you know what exactly processes are taking place and what is going to be delivered and what is going to be outcome of it. It should also have financial autonomy so that you can have self-sustainability for the revenue, exactly from where you're going to get the income. And you have to also have a creation of a chairperson for the research in specific areas. Okay. In the case of leadership, you have to have effective leadership. You have to have a good strategic management, exactly how you're going to go about it and what decisions you're going to take and what are the targets and what are the objectives you're going to overcome such that you will reach your particular vision. Coming to vision, mission, and the roadmap, you have to first of all prepare a good vision and mission statement. You have to see that what you're going to see in the next 10 to 15 years, what is your achievable target going to be, and then prepare a vision statement. Accordingly, how you're going to reach there, your roadmap to reach there is going to be your mission. Smaller ones than that is your goals and objectives. What are your objectives to reach particular smaller goals? What goals you're going to go to reach your final vision? So think of it like in a short-term plan, what you're going to do. In a mid-term plan, what you're going to do. In a long-term plan, what you're going to do. So that is how you will finally have your vision and mission statements marked out. Okay. And to do that, you have HODs in charge of different things, and each HOD is given a particular section to have their objectives done. And then as a whole, the higher education system will have their vision reached. Okay. Have a close monitoring system by the IT-based management information system. So this has to be appropriate committees, meetings taking place, and it has to be implemented on priority. Also, we have risk management analysis. So for this, we have to see what type of risks could take place. We could have natural disaster risks taking place. You could have environmental risks taking place, hazardous risks, financial risks, safety risks, legal risks. So to discuss these risks that could take place in an higher education system, there has to be a meeting which has to be chaired, and it has to discuss all the possibilities and come up with a final solution. Okay. External advisory boards. So here we have different prominent, maybe industrialists coming through, the academicians, the industrialists, government officials. You can have this another meeting maybe every 6 months or so to discuss what is happening in the institution, what can happen, what you can do to improve the education system. Finally, you have the student feedback. In the case of student feedback, you need to know what exactly the student's point of view is and whether how you can improve. So taking the students' feedback into consideration, you can get them to give their feedback maybe every semester or so, or every 3 months to see exactly what is the student's point of view also. So this will also improve on the teacher's delivery. Okay. So going to the next one, we have financial enablers and funding models. That's a resource generation. Coming to the first one, you have the financial policies. So here also you have different roles and responsibilities given to various officers and organizations so that you have the financial assets being done. So then we have the action plans and the budgets. Exactly what action plan you're going to do for what role for of the proposed institutional development plan. You can also see how you're going to get this income, maybe through the tuition fees, through different grants of the research project, through the royalties of the patents, to alumni to donations, through any, and how this is the income point of view and how the expenditure is going to happen, maybe on salaries, on maintenance of the infrastructure, on different utilities. So budget lines have to be done, budget plans have to be done. Okay, so this has to happen not just every 5 years or so. You have to think of something, what you're going to do in the first year of the plan, second year plan. So have a budget head for every year and also for every action that you're required to do. Okay, so not only have a budget of recurring, but also have a separate account for non-recurring too. So you can have separate accounts for them, and also you can see
have an HOD who will be responsible to prepare it for different departments that you have. Okay. Main sources of revenue to be developed. So the tuition fees you have or the government grants, how you're going to get them and how you're going to save this and how you're going to spend it. So that is required over there. Close liaisons with the Government of India ministries and other funding for external grants and funding. You have more than 20 ministries of the Government of India having more than different projects and research proposals that can be submitted to them. You can then try to get financial assistance from the concerned ministries. Also widen the possibilities of getting grants in the approaches sources, have R&D projects, and also have the templates designed with the different SOPs. IRG schemes in each department, you have what you have in a utilization in each facility. You could also check out what equipments you have in the lab or the instruments that you have and how you're going to make this available for the external agencies also. Also, how you're going to get a different funding for different funding agencies. Financial investments committee. So have an investment committee that will be and responsible for making the decisions of how they're going to invest the funds that you have collected, how you're going to reinvest the funds, how you're going to make a profit out of it, how you can see it in the long-term basis of the university assets, and how you're going to approve the investment policies. Besides this, you have staff provided for financial services. So in a financial department, we need to first of all have a financial officer. Besides the finance officer, we need to have the treasurer. We need to have a chartered accountant. We need to have data entry clerks. We need to have different accountants, like a chief investment officer. So exactly how you're going to increase your income. And we won't say minimize your expenditure, but use your spend wisely. Okay, so you have to have staff which is going to have their different roles and responsibilities on doing their work. Okay. Next one we have is the academic enabler. So you have courses catering to professional or future requirements. So not just what is happening right now, but you have to see also in the future, whether what course you are teaching right now, what course you are catering to the students right now, whether it will be useful for their future. Okay, professionally also. So have a wide range of courses that you can give the choice to the students to choose what they need. And for that, we have a multidisciplinary nature program. Curriculum updated as per the industry requirements. So every time the industry requires something, you have to be updated with your curriculum. So if the industry requires something in the 2020s, let's say 2026, the industry is thinking of something right now, but your students are still in 2020 before COVID times. They still do not know what is the present in of what is happening right now in the industry. The industries are way far ahead. You have to keep up with what your students require to do in their future. So what is happening in the industry is where they will get their jobs. They will not know anything. They'll have to take another course in order to get into the industry or work for 1 year without pay in the industry to get the experience of what the industry needs. They might be able to cope up, they might not be able to cope up with what is required. So be updated with your curriculum. Okay, so it has to have industrial linked, maybe have an internship with the industry, so that the industry also knows the capacity of the students, and then accordingly they will definitely absorb them in the industry. Curriculum embedded with employability skills, the same way, such that they will get the job. So it has to be something with the 21st centuries. You have to have some good communication skills, decision makings, problem solving, creativity skills, good business marketing skills, adaptive thinking, analytical thinking, having good maybe AI based skills. Okay, so this could be something to think about. Curriculum embedded with skill enhancement courses, such that you have maybe something with drones, something with AI, something with the 21st digital skills that you can think of, IoTs, Industry 4.0. So different enhancement skills that can be taught. Curriculum be embedded with emerging technologies to integrate it to future work.
Okay, so this could be something in cybersecurity or cloud computing or 3D printing, augmented or virtual reality, simulators. Okay, something that you can do where the students will be up to date in their communication, in their collaboration, in their creativity, problem solving, how they can have a good teamwork with their other student peer-to-peer learning also. Center for Curricular and Life Skills Development. This has to be also a good center for life skill development and has to be fully strengthened also. Faculty and teaching staff. So for this, you have to have good, qualified, experienced faculty such that they are also committed to what they are doing. Okay. It should not be forced upon them. Yes, I've got a job over here. I have to teach. It should be, they should have the love for it and also be qualified. Now, if they're not experienced, they will gain experience over time. Okay. Be good role models to the students such that they will provide good assistance to the students and also have good mentoring too. Okay. Center for Faculty Development. Of course, have different ways in which your faculty can be developed. Okay. Have exchange programs, have internship programs, have some kind of online facility program so that they can do and upskill their what they know right now. Okay. Now, just not for teaching staff, but also for non-teaching staff, one must have good, qualified, experienced non-teaching staff too. And if required also, they can also be developed in their skills. So they also can undergo some particular training such that they can also upskill what they know. Session-wise teaching plan. So you have the relevant course materials that you require that you can have and teach the students. You can have it in e-form, you can have it in actual library hard copy form. You can prepare various question banks so that the student knows exactly what type of questions can be asked, in what way the questions can be asked. Not necessarily it comes from the same question bank, but it is a possibility of knowing in what ways the questions could be formed or what ways are you expecting the answers to be in. Assignments, of course, this would include practice of how exactly they could do a particular assignment. In a question bank, you can then expand it into an assignment. And important to have is a due date. Always have a time-bound assignment such that the student knows priority and exactly how they can use up the time wisely to prepare a good assignment. The best way right now it would be is to have a interdisciplinary assignment being taken place so that they learn and they would know exactly how to do with using different disciplines. Assessments. So you can have different types of assessments of online assessment, offline assessment, have not only restricted to the syllabus, but it could also be applicable type of questions. Value-added skills enhancement papers. This would be a general skill enhancing the employability of the student. So exactly how they will get a job and how they can use this to their particular skill development. Okay. Pedagogy would use the mixed traditional and modern methods. You have to be learner-centric. As one of our participants mentioned, there are a lot of students on the campus. So then it must be a learner-centric type of institute. Other activities also could be something like you have additional skills. We mentioned about cultural skills and also molding good characters and team possibility of working in teams among the students. There can also be some students who are from the financially weaker background. So not only for them, but for everybody also, you could have a scheme known as Earn While You Learn. So that love for learning will be developed because you are earning money, and then slowly it will be the love for learning only, because then you will know that I would like to learn this particular thing. I'm interested in this particular topic. So that will be a good possibility. And also earning while you learn will also be a good thing for the student. They don't have to depend on the parents for pocket money. They also are learning how to earn money. Okay. So it has a dual objective, and this can be in a varied multidisciplinary in nature also. Flexibility and multidisciplinary would be about having different MOUs signed with different institutes and industries, and therefore you can have different certification progress and programs
happening so that the student can get a certificate too. Opportunities to develop and utilize the different innovative skills. You could have overseas exchange programs, you can organize competitions like hackathons, and also have the innovative ability of the student improved. So then the student also will feel good about themselves and also have a good healthy competition with others. International exposure. For this, you can have conferences being organized, you can have scholarship programs, international scholarship programs, you can have faculty exchange programs where faculty from abroad comes to the state to teach. Your your teaching staff can also be sent abroad. So you have a faculty exchange program, you can have a student exchange program. So this is the international exposure that one can do for one's institute. Okay. Going to the next one, we have research and intellectual property enablers. So is it clear till here? Participants? Yes, ma'am. Yes, thank you. So first thing we have is quality research. So one has to have a good number of research projects taking place so that you have a good quality research also taking place. So this would be, if you have more number of students taken in, you will have more research taken in. You have more number of students who are interested in research, then for the research intensive universities, yes, you will have a lot of research taking place. And that too, you have to see that your research is a high quality research. Now, this research could be based on your curriculum, could be based on an interdisciplinary of your different subjects, but you have to see that the research project has a good quality. For that quality, you have to have good research labs and good facilities too. So quality research just means what you are going to do, it's having what you have with you and then doing what you can do. Okay, so that's the quality research. Research-oriented experienced faculty members. Yes, you have to see that your faculty members also are into research. So those who are research-minded, those faculties would do more of research. So that would be working more in a research-intensive university. Enabling this development of disruptive or affordable technologies, you would have to have basic understanding of research and an applicable understanding of research. So then you can have your own sustainable models. API-based faculty compensation. So if you encourage your faculty to do more research, you can also say that, yes, you will get some API points for it. For this, you can also have like some kind of compensation that you will get so many number of points if you do this much. And of course, if you publish it in a journal or a book or so, then accordingly, you will also get those points. So this would encourage faculty members to do more research. And then there could be like not a competition, but a healthy competition between faculty members to do more research. Targeted research and collaborative research. So not just doing only with your own faculty in your own discipline, but also with others. So have a collaboration with not only just in your own institute, you can have it with other institutes too, to publish papers, to file patents, to do publish books or do anything like that. More PhDs and more postdoctoral research scholars. So if the faculty members have PhD, then yes, it would be possible for those members to guide students, more PhD students, and of course to have more postdoctoral students also. So first thing first is to have more faculty members with PhD such that they having PhD will be able to mentor students to do their PhD and also to have to do their postdoc also. Faculty is also to encourage to write books, to publish papers, to do more projects, to have patents, to come up with their own innovations, to have collaborations with other faculty members. They have to do something of this sort such that they are encouraged to do the needful. You can also ask the students to help you out with your particular work. You can train them as project fellows, research assistants, and they also would get pocket money to do the same. They would get the experience of knowing how to do research. They would join for PhD to do a proper
proper doctorate or even a postdoctorate. So that is how you will encourage, first of all, faculty members to do research. Get your students to help you out. Students are encouraged to do research. They also go forward with the PhDs. You have a lot of PhDs. Faculty members also student-wise. More conferences, at least 2 conferences per year per college. This would be more like per teacher, per college, per university. Okay, so research scientists, faculty members, everyone are kept active by doing research. Okay, so this has to be such that you organize more and more conferences. Your teachers also get a chance to publish and also to speak at the particular for their presentations at a conference. Student involvement in research, already mentioned that they can come up with something. They can also publish their work in particular journals or even in your own university website, which I'll be coming a little later. Industry and institutional collaboration and consultation. So knowing what the industry wants, your students also will be able to work on it. Your faculty members also will be able to work on it and thereby get particular patents, and also it will be useful for the industry. University incubation centers. So over here, the university gives a basic push to say how exactly you can start off with your business, you can start off with your research project, and how you can be encouraged to start off your own company. Okay, so have incubation centers. University publishing through its own press. So your university can have online publication system where you can have your own publishing house with your own your number, with having develop new knowledge. It can also be having a citation service also. ISBN. So you have this aiding research and also improving the caliber of the articles. Target patents claims for the UG and PG projects. You have to submit patents applications and enhance the outcome. Faculty ranking system. This, as I was saying, if you have the API system, you can also have a healthy competition of having who has the best API in the year. They could be awarded for the same, and everyone would also try to gain on their particular APIs, such that they would like to be also having a good research project and also being the best at what they are. Chief Technology Officer or Research and Monetization have different, a chief officer who will monetize the particular research, monitor exactly what is happening at different levels, at different disciplines, and deal with all the property licensing and the transfer of activities. So they would be a team which will be trained to do only this particular one with the chief officer in charge. Okay, so this would deal with all the external fundings, the internal fundings, how it could be assessed, whether it's an online or an offline mode, and this syllabus could be restricted to only core or the elective subjects also. Value added skills enhancement can be also teacher learning pedagogy, which could use a particular stuff either in the real environment or even in the virtual environment also. In the case of other learning, other activities as pastoral learnings, you could have the earn value learn scheme. For those who are all-rounded, you can have some kind of skills for them also. You have earn value learn for those who requires it also. You can also support the financial needs of students. Flexibility and multidisciplinary. For the flexible, you can choose whatever combination of subjects you want. You have multidisciplinary where you can also have MOUs with industries or other reputed organizations. And you can also have the research done under the guidance of the research guide. Opportunities to develop and utilize the research and innovative thinking skills. You can also raise the knowledge, the skills and attitudes of the students and the faculty. You can organize hackathons. You can have overseas exchange programs too. Okay, so not only in teaching only, not only in academics, but also in research also. So it's almost the same way you can do it. You have a couple of things of hackathons, exchange programs, earn value learn schemes. Okay, so these are like between the academics and the research. Now, a totally different one we are coming to now, human resource and supportive facilitative enabler. Okay, so over here you have the student learner enabler. So it could be a holistic admission framework where you have a holistic approach of how you would assess
how you have extracurricular activities, extracurricular talents that you have in the students, how you can check out the inclusion of everybody. You can also have a merit, you can also have a merit and equity based financial aid. You can deploy different scholarships and financial fundings also for the underrepresented groups. Academic success programs would be also dealing with how you can take and navigate the education successfully. Staff empowerment enabler. This would be a competency-based recruitment where you have institutional goals and the culture of performance and shared values. You can also have professional development of the teachers and the students and inclusive protocols also. Faculty and research enabler would be a transparent recruitment appointment where you appoint and recruit the different staff members to a transparent system. A continuous professional development where you go on training your teachers and your research staff and also non-teaching staff, and a tenure and promotion mechanism where they get promoted because of certain criterion being crossed. Cross-functional enabler. Here you have a reward system where you recognize your students, you recognize your faculty members, and they are then facilitated. Is there resilience and well-being programs for fostering an environment of all the members of the higher education community, a leadership and collaborative opportunity to allow the faculty to have good initiatives and have projects too. Strategic funding and emotional enabler would be dealing with the career research options and also the support networks of either students, the staff, the faculty, and all the same. Enablers for pedagogical innovation, which will promote the teacher's excellence to various fellowship programs that could be there. You could also have accessibility or proximity of having a good leadership with rich communication, where the messages are not just understood by what is intended, but among all the individuals also. Be good role models for the students and the entire community. Have good institutional value, core values, a good vision, trust among everyone. You not have trust only within the institute, but also have to have trust outside the institute. So these are different supportive facilitative enablers that you have. Okay. You have to have a goal wherein the student knows exactly what is their target and what they need to achieve. There has to be also a safe and secure campus such that everyone feels protected within the institute. Okay. You also have to have a legacy of the system and respect for everybody. Okay. Besides having physical health for available 24 hours long, you have to have also ensure the students for mental health by having a proper infrastructure for the same and support also. Okay, that brings us to networking and collaboration enabler. So here we have strategic collaboration, which deals with partnerships from industries. You can have different MOUs being signed. You can have the curriculum designing. You can have also alumni networks that could be used for mentoring and also for funds and research and infrastructure development. Besides this, the strategic collaboration can also be within industry, where you can collaborate with an industry and also have internships, or you can even have apprenticeships. Apprenticeship is where the person could get paid for it also, and it can be at the particular industry needs. Academic and research excellence. So over here, you can also pursue your academic collaboration with the core research with a shared curriculum. Intermobility of the students, where the students can shift from one discipline to another. You can also have a dual degree promoting the students and the use of facilities of the institute. Research collaboration. Here you can have सर इतना हो गया कि हम 2 घंटा तक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं और जितना कंप्यूटर साइंस के मैं तो एग्जाम ले रहा हूँ। अरे भाई एग्जाम रहा नया बच्चा आया है, इसको जो है ना इधर उधर कहाँ बोराएगा भाई। Okay, this could have a possibility of having shared database
library access, and also co-authoring research. You don't have to have the research of what you are innovating, but you can have it along with someone else. So you are co-authors to the particular research. You can have a paper written by both. You can co-research with another faculty member. चलिए अब जो है इस टॉपिक को बस 1 से 2 क्लास में खत्म कर देंगे। 1-2 का थ्योरम है, उस थ्योरम को कर देंगे। Sir, GN Prasad, do you have a question? Sir GN Prasad? Okay, I think it's by mistake. Besides now these academic and research excellence, you also have practical exposure and experience. When you have practical exposure, what you are learning in theory is all theoretical. And now you need to do something actually practically. Now, how do you do it practically? You can do it practically in the lab. You have hands-on experience on exactly what you have learned, you are putting into practice. You can do it in an industry. You can have a workshop where you can actually hands-on experience. It might not be actually working with components. It could be working with a computer. It could be working with instrument. So you can have the scheme where you can also earn when you learn, kind of a scheme where you have a practical exposure. You're doing something practically and you're earning money for it. Okay. Community engagement and service. So you can collaborate with any NGO or social service organization. You can have the outreach. You can go into the field. You can work with Unat Bharat Abhiyan. You can have your societal developments being enhanced. You can have a civic partnership with anyone, with a local body, with a community, with a education program. You can also have professional development and employability, where in your students are then placed in different industries. They get placed for jobs. They can have to work with different industries before, while doing their internships. They can work as apprentices and earn money there also. Faculty consultancies, they can promote faculty-led consultancies and also remain with the industry processes. Quality and credibility. Over here you have accreditation and certification with national accreditation bodies. You have quality assurance of what you are doing is with quality. You can also have internal standards and learning outcomes, what is being done after doing it. Innovation and entrepreneurship. Innovation is when you are starting up something of your own and you are innovating, you are inventing something new. Entrepreneurship is when you have a business of selling what you have done. Okay, so startups are very much required. For that, we've already mentioned universities have to have incubation centers where they provide some basic money, some basic seed, and you continue and you start on with your own business. Okay, so incubation centers are required, funding are required. How are you going to get the fundings? How are you going to get the startup initiative support? Have a digital infrastructure, provide a backbone to startup activities. Okay, so this is dealing with innovation and entrepreneurship. This brings us to the end of the networking and collaboration enablers. Okay, and next one is the physical enabler. Okay, is it clear till here? So we have our last two enablers. Participants? Yes, participants, please be responsive and please be interactive. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Okay, fine. We have the physical enabler. Okay, so over here we have smart campus. So dealing with smart campus, it has a best balance of what the cost could be like, the comfort could be like, the risks could be involved. When we say smart, it detects and also fixes small problems before it grows into bigger ones. Okay, it could also cause distractions to everyone. So as it is smart, it detects the problem, it solves the problem, and it's like systems talking to each other. You have the lighting system, the security system, the environmental system. So different systems are talking to each other. You can have a performance of a campus building with a greenhouse effect, a targeted problem, or new technologies. In the case of green sustainable buildings, you have green buildings on the university campus, as you notice in our picture that we have pushed forward first only, which would be actually a basic requirement. It's not only desirable, but it's a need for what is existing right now.
It also could have an open environment with models of water and energy consumption. So how are you going to, first of all, sustain it, how are you going to use it, and how are you going to produce it? Okay, so you have to have a green energy, harvesting water, renewable sources of resources, recyclable ones to produce and provide clean air, water, food, light, electricity in a sustainable way. So it shouldn't be that it should cost anything much. Okay. Also, when you have an air conditioning system, you shouldn't have individual air conditioning systems. You have to have a centralized air conditioning system so that it's available to everybody at one shot. Okay. Infrastructure to commute. Now, as I mentioned also, better infrastructure with signs on the streets. Also, especially for the different disabled, you have to have special separate spaces for them to commute, to move from one place to the other. Also, the motorways, they have to be like parked outside the state, outside the campus, and within the campus you could use bicycle paths, you can have battery vehicles, you can have pedestrian walking areas, accessibility also for the people with disabilities too. Okay. Having this, you have to have an administrative block, admission and counseling center, which could be centrally stated, and you can have your different departments rounded, as I mentioned first. So the number of cubicles required for all the number of non-teaching staff, have adequate space for them inside so that they have a lot of place for each and everyone with whatever is required by them. Okay. Counseling center also required. Different departments or different disciplines that are existing right around the campus also could have their smaller administrative blocks so that these small blocks can then discuss with the main block. Okay. Library digital resource center. So you don't have to have only books in physical form. You can also have books in e-form. Okay. So when we say library, it's not just library with full of books and journals and papers and all the periodicals and magazines and newspapers. They can also be e-books, e-papers, e-journals. Okay. They also, you should have place for the students, for the faculty members to sit and read either the physical forms or sit and read on the computer. So have enough of computers, enough of place to sit down so that one can improve on their knowledge and have their research taking place. Lecture complex classrooms. So for the lectures, you have to have different classrooms, tutorial rooms, discussion rooms of different sizes that were required for, and the sitting capacity such that for smaller disciplines, with those who have taken a different combination of disciplines, you have a smaller size for them. Once you have more demand, you have a larger room for them. So a lecture complex with different sized classrooms. Tutorial rooms should have good video recording facility, audio recording facility, so that you can have your tutorials being done. Examination branch. Now, there should be a separate examination branch. You can have a confidential examination branch such that all the papers are set and is kept under lock and key. Besides this, you can also have the papers kept in maybe e-form or so, and then printed only when it is required. Okay, so that you know how many students are opting for which subjects, and then accordingly you can go ahead with it. Facilities to faculties and staff. So for this, you have to have adequate number of well-equipped facility for the faculty chambers to accommodate all its permanent faculty, and also for the research scholars also. You could have them staying on campus, so you could have a 2 or 3 bedroom facility for the faculty with all the desirable requirements also, besides the basic requirements. Meeting rooms. Again, meeting rooms like the classrooms have to be of various sizes. So you have meetings of smaller meetings, meetings of larger meetings. So they have to be with its all equipments of the furniture required, the central AC that we have had,
electronic communication system, presentation systems, internet facility system. So whatever is required for a meeting room has to be present in the meeting room. Office rooms, again, suitable for all the staff members. It has to have whatever requirements of an office should be there, a basic table and cabinet for sure. Besides the अटेंड करता है तो रजिस्टर laboratories and research centers. For this, you have to have a super specialty research center, whatever basic requirements of a particular laboratory. And besides that, for research centers, we mentioned in the library, you have to have the most current also articles present in either e-form or even in hard copy form in the resources. Computer centers and multimedia studios, you have to have as per student ratio to computer, whatever is the basic requirements that you can do. And the multimedia studio for doing the digital contents creation and recording facilities. In the case of cafeteria, dining and the mess facility, cafeterias should be having the cooking equipments, the apparatus, cleanliness, hygiene, very a must. That was your basic requirements. Dining room, according to how many students, teachers, non-teaching staff that are there, they could stay and have their meals. Mess facility, if anybody wants to cook their own food, also they are most welcome to do so. Games and sports facility, not only indoor games, we can also have outdoor games. So of various, have a area where you can expand on your sports facility and have maybe whatever's required, like a gym or a swimming pool or whatever modern indoor stadiums are required or the arenas are required outdoor. Okay. Auditorium, ad class, conference room, again, as per different meetings of different shows, or they're putting up of different music, whatever shows that are there for the meetings or any artistic shows. You can have an auditorium of various capacities depending on the type of institution and the requirements. Hostels for students, hostel for research scholars, hostels for international scholars. You have maybe a 50% or a 60% of the outstation who will be there staying on campus and with the different facilities available to them. Parking, as we said, it would be out on the borders of the campus. And it should also meet the needs of the stakeholders. You should also have a facility within the campus such that you have maybe a electric bus or so taking it through. You have e-vehicles taking them to different departments, or the walkways also would be like in a shady area, not necessarily in the sun. Exhibition hall, for those who have done up their different activities, they could exhibit their skills on different in the different halls. Guest accommodation, in case you have a guest house to accommodate the guest members who are coming for the particular meetings. And you can have it at various at a particular star level with the food facility too. Commercial shops and centers. So you could have a commercial shopping center where you can have a laundry facility, a horticulture facility, stationery, general stores, a bank, whatever is the necessity of the on-campus requirements, okay, and whatever is required by the students or faculty which on campus. Health and well-being, as I mentioned, have a 24/7 physical outdoor patient type of modern hospital, mini hospital type of facility, and it would not be just physical health; it could be also mental health too. Student recreation facility, for those students who are having a free lecture, they could do particular recreation facility wherein they don't have to only go to the library or study. They can also do some other extracurricular activity. So have some recreation facilities where they can also use up their time wisely. International student centers, of course, mentioned as have a international students, have some centers, hostel facility, also guest faculty. Incubation centers for the collaboration for starting up your own entrepreneurship, botanical garden with the living plants, and also for the purpose of research. You could have them on display, the different rare plants also.
and vocational education training system with different equipments, machineries and tools for the various learning skills and also part of the post curriculum. Okay, so you have the different physical enablers that we have just mentioned, and this will bring us to the end of physical enablers, and we have our last one of the digital enablers. Okay. In the case of digital enablers, we have the first one of internet usage. So in this case, we have to have Wi-Fi provided campus-wide so that you can connect to the external world, connect to everyone around the campus also. It would be easier through the electronic devices. Website, as I mentioned, we would have to have our publishing system on the website. Whatever we have achieved, we can put on the website. Whatever we want to propose, we want to advertise, will be there on the website. So this will provide what is happening in your institution worldwide. Okay, so that information would go to the public. Online messaging stakeholder groups, for if you can do the messaging either in the vertical or in the horizontal way between different stakeholders, from you to your peers or from you to high authorities or lower. Online blogs and sites for every course. You can have a day-to-day progress of what is happening to your students. You can say they can post, you can also post, and also to the public. Wi-Fi campus, I mentioned, can be on campus and for the classrooms. Online study material can be in both audio form, video form, physical form. In e-form, you can have a PDF or you can have some way of getting the information. Digital library, I mentioned again, the library can update with what they have in e-periodicals and e-journals also. Digital publishing system, where you can publish in your own university, having your own publication for books, newsletters, also like journals also. Paperless office is where you are trying to have an e-office without using paper, without actually printing anything and sending it. It'll also be easier from your centralized office to the various departments round. You can have the administrative permissions taken place within minutes. Okay, like how you have paperless office, you can also have paperless exams, so you have online exams or digital without wastage of paper. Since you have a paperless exam, of course, you have online evaluation. When you have online evaluation, you have evaluating the papers online. With that, you are then announcing your results on the website. Of course, the students will have access to it only after they log in with the particular password or so. NAD marks card facilities, online admission tests, education ERPs. You have plagiarism software facility where you are actually having the software, the plagiarism software with a licensed one so that you don't have any similarity checks or anything like that. And online digital magazines and student publications, you are trying to encourage your students also to publish in this particular magazine. Online placements, not only having jobs offline, but you can have a job online too, working from home or working at a company online. Placements, video documentation on each and every course that you are doing. You can publicize it to the world on what you have done and what you can do. Social media to promote what you have done. Use of different ICT studio for video online classes. You can have online classes taking place. You can have digital format conferences and an open publication system. Okay. So that brings us to an end of institution and development plan, the activity. I hope that is clear with everyone. Yes. Just a small video. Just give me a minute. Can you tell me if my screen is visible? Yes, madam. And whether it is audible too. Not audible. Every educational institution has a social mission
as well as an academic mission. The social mission includes providing equitable access to high quality education and preparing the graduates to successfully perform their roles in various professions that they will take up after passing out of your institution. So how do you meet the mission of your institution? The academic mission includes focusing on academic excellence, research innovation, leveraging the digital technology in education, making the education more meaningful in the lives of your students, international collaboration, and so on. How do you make sure that you achieve the mission goals set for your institution? To achieve this goal, every institution has to prepare an institutional development plan. UGC has recently announced guidelines on preparing the institutional development plan. This is a general framework using which every institution can prepare an institutional development plan unique to their mission. These enablers include academic excellence enabler, research innovation enabler, capacity building enabler, physical infrastructure development enabler, digital technology enabler, and so on. As a leader of the educational institution, don't you think it is time for you to develop an institutional development plan to take your institution to the next level? Please do read our UGC guidelines on institutional development plan and prepare a roadmap for your own institution. Yes. Thank you so much, participants. Thank you, ma'am. Participants, if you have any queries or the question, you can ask to Professor Ingrid, ma'am. Please, anyone, that will be really appreciated. Yes, anyone has any questions? Please, anyone can confirm, either we can conclude. Yes, I don't No, think sir. so. Yeah. Okay, ma'am. So shall we conclude, ma'am, if you could permit? Yes, yes. So on behalf of Malvi Mission Teacher Training Center, Sant Gadge Baba, Amravati University, and Government College of Engineering, Lakhisarai, Bihar, and all the participants those who have present here, I extend my sincere thanks to Professor Dr. Ingrid, ma'am, for such an informative and wonderful session towards the development and development of this institutional development plan. Friends, session ma'am has explained in this in her 90-minute sessions a deep and elaborative concept of the development of this IDP, and now it is become essential. At least in the government of Maharashtra, the government of Maharashtra has issued a resolution that every institution shall develop their institutional development plan by the end of 31st of December. Without that, the government will not disburse their salaries. So hope so in the Bihar and in the Bihar state and the most of the universities, such kind of directives are there, and participant will try these inputs to develop their institutional development plan at their respective institutions. So with this, I once again extend my sincere thanks to Professor Ingrid, ma'am, for such a wonderful and insightful session and her precious time. So with this, I once again extend my sincere thanks. And with the kind consent of Professor Ingrid, ma'am, I would like to declare that this particular session will be over here and we will continue for the next session. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. And also thanks to the director for giving me this opportunity, Professor Atik. Thank you once again, participants, for your patient listening. Thank you so much, everyone. Thank you, madam. Thank Okay, you. so participants. Good afternoon, Professor Bedre. Thank you, madam. Thank you. Good afternoon, ma'am. Happy to see you after a long time. Yes, sir. How are you?
Fine. Thank you. Over to you, sir. Hello, Professor Bedre sir, shall we start if you could permit? Have you, please? Yeah. So participants, as I have already told you that the next session was very much important sessions because it is directly with interest to our institution because this enrollment and the admission at our institution is very much important to secure our workload. So what kind of inclusion is there in the education and what type of institutional diversity and particularly the student diversity is there? We will going to discuss this much important aspect. So before starting the session, I would like to request all the participants to please switch on their cameras so that session is highly interactive. And rather than the monologue, it should be expected that the dialogue will be there. So all the participants are requested to kindly switch on their videos. Not only Mishra ma'am, just only I am seeing that Dr. Mishra ma'am is there. Yes, Dr. Vikas Kumar sir is there. Dr. Shanti ma'am, Dr. Shanti Jaiswal madam is there. Rahul Khere sir is there. Yes, come on participant, please switch on your videos because we will not move further in such kind of direction. Only 4 participants have switch on their videos. Fast, you can switch on your videos because the session is okay. So hope Professor Bedre sir, shall we start if you could permit? Yes. So friends, good afternoon once again. First of all, I extend my warm welcome to our esteemed expert, esteemed and the scholarly expert, Professor R.T. Bedre sir, to this flagship program and particular to this session. Friends, as I already told you that this session or this vertical of this national education policy, that is student diversity and the inclusive education, which is the foremost component pillar of this national education policy, is very much important because every institution in this village is facing the different challenges, specifically the enrollment challenges. And this policy has targeted to achieve the gross enrollment ratio 50% by 2035 in the higher education and in the 100% in the schooling education by 2035. So what kind of opportunities are there and what are the challenges before us? Not only being the higher education institution, but also being the faculty associated with that institution. We will going to discuss this important aspect with the help of Professor Bedre sir, who is the distinguished academician, researcher, and the higher education leader with over 3 decades of teaching and research experience, and currently serving as a professor and the director of this Malvi Mission Teacher Training Center at Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, which is the Central University situated in the Sagar, Madhya Pradesh. Professor Bedre, before joining this position, Professor Bedre sir has also served as a principal for a 6 year at Marathwada region, at the College of Marathwada region situated in the Maharashtra, Gangakhed, Parbhani. Professor Bedre sir has made a significant contribution to the academics, research, faculty development, and the institutional development. He has been author of the 7 books and the edited 10 volumes with a research interest spanning Indian drama, Dalit literature, higher education policy, teacher education, women's study, and the national education policy. His scholarly work have appeared in the reputed indexed national and the international journal. He has been successfully completed 5 minor research projects and 1 major research project funded by the different funding agencies. As an accomplished research guide, Professor Bedre sir has supervised 11 PhD scholars and several MPhil dissertations. His Professor Bedre sir is instrumentally engaged in the faculty development and design and executed the numerous faculty development program, including a faculty induction program, orientation program, NEP orientation and sensitization program, refresher courses, short-term faculty development program, and train the thousands of faculty, researchers, and other key functionaries across the country. So friends, this is the brief introduction with regards to Professor Bedre sir. Today we will going to talk about, rather than the monologue, this session will be going the dialogue. So I will request all the participants to kindly take the active participation in the interaction. With this, sir, I once again extend my warm welcome to you and request you to please start with your session. Sir, please.
Thank you very much for being so generous while introducing me to this gentlemen and women here. It is already 3:30, as it is well known to you. After lunch, conducting a session becomes very difficult. मुझे लगता है कि रवि रंजन साहब ने एक मूवी देखी होगी बहुत साल पुरानी, 30-35 साल पुरानी। दिल नाम की एक मूवी आई थी, दिल। उसमें गाना हुआ करता था, मुझे नींद ना आए। अब मुझे डर लग रहा है कि मुझे नींद ना आए। So if you want me to be awake, kindly open your video so that we can have a better kind of interaction. Okay? चलो, थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात है कि 4-5 लोगों ने अब अपना कैमरा खोला है और बाकी सारे लोग भी उनको फॉलो करेंगे। लेट अस होप दिस। डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो सलाम आतिक साहब को, बाद में बाकी सारे लोग। जिस कॉलेज की कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम हो रहा है, उस कॉलेज की प्रिंसिपल साहब, ऑल द ऑफिस बेरर देयर, एंड यू माय डियर हमसफर, I should say here. Instead of calling fellow sufferers, I should call हमसफर। हमसफर एक अच्छी मीनिंग है, लेकिन फेलो सफरर कहा तो फिर दोनों इंग्लिश वर्ड का मीनिंग बहुत अलग निकलता है। तो आई डोंट वांट यू टू सफर एंड आई डोंट वांट माई सेल्फ टू बी सफर्ड ड्यूरिंग दिस सेशन। So this 90-minute journey will become less painful. कोशिश करेंगे कि ये 90 मिनट का जो हमारा सफर है वो कम तकलीफदायक हो। ओके। हालांकि हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने थिंग्स हैव बीन मेड वेरी इजी फॉर मी। उन्होंने कहा कि व्हाट टॉपिक आई एम गोइंग टू टॉक ऑन and what is its relevance in higher education, particularly as far as the Sapna is concerned, है ना? The great American dream के बारे में कहा जाता था। Nowadays we are talking about the great Indian dream of becoming such and such by 2047. ये सारी चीजें उसमें आती रही। Friends, we know that many times in the political arena it is said, out of politics only, कि पिछले 80 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। हम सुनते हैं कई बार, हम क्यों कहते क्या कहते उसकी बात हम छोड़ देंगे। वी ट्राई टू बी पॉलिटिकल हियर। कुछ नहीं हुआ, बेकार गए, वेस्ट गए। लेकिन आई बेग टू डिसएग्री विद देम। पिछले 80 सालों में बहुत काम हुआ है। हम कहाँ से निकले थे, कहाँ आए हैं। जब हम आजाद हुए 1947 में, तब हमारे हालात क्या थे, आज क्या है। एक भूखा कंगाल देश हमें मिला था, जिसकी इकोनॉमी कभी वर्ल्ड के 24% हुआ करती थी, वो 2% तक आ चुकी थी। बस इलिटरेट भूखे लोग हमारे पास थे। इंफ्रास्ट्रक्चर था थोड़ा बहुत जो ब्रिटिश नहीं ले पाए थे, वो उन्हें हमारे पर ले छोड़ा था। इस बात को हम समझे। जितना लूट ले जाना संभव था वो सारा लूट ले गए थे। लूटने के बाद उनकी सहूलियत के लिए जो बनाया था वो ले जाना संभव नहीं था, वो हमारे लिए छोड़ गए थे। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया की बात हो, पार्लियामेंट, हमारी पुरानी पार्लियामेंट हो, सारे एयरपोर्ट हो, सारे पोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, वो लेके जाना संभव नहीं था, इसलिए रखा था मैडम। अदरवाइज वो भी लेके जाते, क्योंकि उन्होंने शुरू से क्लियर था कि हमें लूटना है। तो ऐसा देश हमें मिला था आजादी में। बंटवारे के निशान भी बहुत ताजे थे, बहुत सारी चीजें थी। और ऐसे हालात में फिर एक देश आ जाता है और धीरे 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 चीजें बननी शुरू हो जाती है। एंड वी बाय द 21st century वी आर इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजिशन। बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, भले हम सुपर पावर ना रहे, भले हम विश्वगुरु ना रहे हो, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हिंदुस्तान की पिछली सदी में और इस सदी में भी रही।
So this could take place, of course, due to the visionary leadership there, but at the same time, the thing that took place in our higher education system. हायर एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन कभी भी देश के प्रगति में, देश की उन्नति में नकारा नहीं जा सकता. एंड व्हेन टुडे वी से, सर, जब आम आदमी कहते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे पास है, कहा जाता है कि लगभग 40 to 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज यंग पॉपुलेशन. हमारा एवरेज एज 28 ईयर्स है. हिंदुस्तानी का एवरेज एज ओनली 28 ईयर्स है. यू कैन इमेजिन दिस कंट्री इज फुल ऑफ यंग पीपल. अब थोड़ा सा सोच लेना सर, 2% से लेकर हम 2020 तक लगभग 25-26% हमारा GR बन चुका है. GER, मुझे लगता है कि इसके बारे में अभी हमारे कोऑर्डिनेटर सर बात कर रहे थे. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अब वो कैसे निकाल उसकी बात हम करेंगे. हम 2% से शुरू किया था, 26% तक आ गए थे 2020 तक, और सिर्फ 26% GER के साथ हमने इतना बड़ा काम 80 सालों में किया है. हम मंगल तक गए, हम चांद तक गए, बहुत सारी चीजें हमने कर ली. IIM बनाए, IIT बनाए, कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली इंडियन से भरी पड़ी है, कनाडा तो पूरा पंजाब से भरा पड़ा है. मतलब दुनिया के हर कोने में हम अपने टैलेंट के बल पर, आपके बलबूते पर जा चुके. दैट इज द सक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन. अब मेरा ये कहना, सिर्फ अगर हम 26% से इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, अगर ये GR ऐसा ही बढ़ता जाए तो नेचुरली द पिक्चर इज क्वाइट ब्राइट. अब देखो 26 तक आ चुके थे हम, जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा कि हमें 50 तक बढ़ना है बाय द ईयर 2035. अब हम उसको थोड़ा उल्टा करके देखें सर. बहुत अच्छी बात है कि 2% से लेकर हम 26 तक गए, लेकिन ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई 26% है तो 74% नहीं है. उसको थोड़ा सा उल्टा करके देखे तो 100 में से 26% हमारे पास है. इसका दूसरा मीनिंग ये है कि 74% हमारे पास नहीं है. अभी 74% को, या 74 में से और 24% को हमें यहां लाना है, हायर एजुकेशन में मेन स्ट्रीम करना है. अब ये जो 74% बाहर है, अपने शौक से तो बाहर नहीं, जरूर कुछ मजबूरियां रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. कोई तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये एजुकेशन के बाहर है. कुछ फाइनेंशियल रीजन के चलते हैं, कुछ सोशल रीजन के चलते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल रीजन के चलते हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स आर. इन सारे लोगों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हायर एजुकेशन में, दैट इज SEDG, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. और ये मैं आपको बता दूं मैडम दीपा जी कि ये ऐसी डिजीज किसी एक कास्ट में, किसी एक कम्युनिटी में, किसी एक रीजन में, किसी एक स्टेट में, या जंगल में, या शहरों में नहीं पाए जाते. दे आर स्कैटर्ड. हमें सारे लोगों को उच्च शिक्षा में लाना है. आज हम उसी पे बात करेंगे कि डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट डाइवर्सिटी, and how we want to include them in mainstream education. आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं. क्या हो रहा है आज ये? Let me share my screen. कुछ दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है ना कुछ? थैंक यू. तो दिस इज द टॉपिक. जैसे कि मैंने कहा आपसे,
फिर ये भी सवाल बनता है कि सारे लोगों को हम क्यों जिद कर रहे हैं कि सारे के सारे कम से कम 50% उच्च शिक्षा में आए। सर, देश को एज अ होल अगर हमें बढ़ना है आगे, तो सारे लोगों को लेके ही चलना पड़ेगा। ये बिल्कुल संभव नहीं होगा कि हम 74% लोगों को बाहर रख रहे हैं और 74% बाहर रह जा रहे हैं और सिर्फ हम 26% से आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ होगा, सबका कंट्रीब्यूशन होगा, तभी तो हम आगे बढ़े। इसलिए इंक्लूजन ऑफ ऑल इज नेसेसरी। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी कैमरा थोड़ा ऑन रखें, नहीं तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो ये थोड़ा सा इसको इसको बढ़ाया जा सकता है क्या? ये जूम में होता क्या है, ये सिर्फ एक साइड में मुझे दिखाई देता है आपकी स्क्रीन, और उसमें जितने भी 4-5 लोग विजिबल है उतने रहते। चलो, अभी तो मेरे सामने अभिषेक जी और मैडम दीपा जी है, तो थैंक यू। जैसे कि मैं कह रहा था कि वी हैव वेरी वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन विद अस। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास, शायद सबसे लेटेड भी कहूंगा मैं। हालांकि हमारे साथ जो देश बने थे वहां काफी लेट आ गया, लेकिन आ गया, जो गाड़ी हुई चल रही है वहां। एंड उतनी उथल पुथल हमारे यहाँ नहीं हुई जितनी हमारे पड़ोसी के साथ हुई। तो वी हैव अ वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन भी था। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सपना दिखाया गया है, जो उम्मीद बनती है, उस उम्मीद को, सपने को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब शिक्षा में लोगों का सहभागिता, प्रतिभागिता मिले। तो आई मीन टू से, to fulfill the constitutional dreams, participation of all the groups is very essential. And another thing, जैसे कि मैं कह रहा था कि हमारे पास सबसे ज्यादा आबादी है। अभी अच्छी बात है कि बुरी बात है तो अभिषेक जी मुझे बताएंगे। अच्छी बात तब होगी जब सारे के सारे लोग काम करते हैं, कुछ न कुछ अपना योगदान देते हैं, तभी बात आगे बढ़ेगी। जी भाजी, हम कहते हैं कि किसी फैमिली में बहुत ज्यादा आबादी है और वो सारे के सारे काम करते, तो दैट पॉपुलेशन इज एसेट टू दैट फैमिली। मान लीजिए मेरे घर में 20 लोग हैं और उसमें से मान लीजिए कि 10 युवा हैं, और 10 के 10 सुबह किसी न किसी काम निकल जाते हैं, 4 पैसे कमा के लाते हैं, तो 10 पीपल आर एसेट टू माई फैमिली। अगर मान लीजिए कि 10 में से सिर्फ 2 काम करते हैं और बाकी के 8 घर बैठे निठल्ला खाते हैं, तो दे आर लायबिलिटी टू। The same is true in case of nation also. हमारे पास युवा आबादी है, बहुत अच्छी बात है, but whether we are able to transform this population into workforce or not determines the nation. अगर ये लोग सारे के सारे काम करते हैं, उनके हाथों में कुछ काम है, मैन्युफैक्चरिंग में अपना रोल अदा करते हैं, सर्विस सेक्टर में अपना रोल अदा करते हैं, तो नेचुरली दे आर एन एसेट टू अस। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है, प्लस पॉइंट है हमारा। लेकिन इतनी सारी युवा आबादी कुछ काम नहीं करती है, हाथ में मोबाइल पड़ा है, हाथ में झंडे लिए हैं और नारे लगाते निकलते जा रहे हैं। एंड जस्ट एट द एंड ऑफ द डे they are coming back and eating whatever is left over there brought by their parents. ये हमारे लिए एक अपमान की बात है, हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। अब इस पॉपुलेशन को वर्कफोर्स में ट्रांसफॉर्म करने की जिम्मेदारी हायर एजुकेशन। स्कूली शिक्षा से मैडम हम लेबर नहीं बना सकते, हम ह्यूमन लेबर नहीं बना सकते। स्कूली शिक्षा सिर्फ आपको एक हद तक लिटरेसी देती है। आप लोग को देख लेना, अगर किस स्कूल का करिकुला देखते हैं तो ये बच्चा एडिशन कर पाएगा, सब्ट्रैक्शन कर पाएगा, मल्टी कर पाएगा, डिवीजन कर पाएगा, एक लिटरेसी आती है, बच्चों को ये समझ आएगी, वो समझ आएगी, वो स्कूल लेवल पे। अब वो दिन चले गए मैडम जब नॉन मैट्रिक को भी नौकरी मिल जाती थी। आज हमें किसी भी जॉब के लिए कम से कम बैचलर होना है, डिग्री होनी है।
आप मुझे कहोगे कि चपरासी के लिए कहाँ डिग्री लगती है। मैडम आजकल चपरासी की जॉब भी खत्म हो गई, ये जॉब फुल टाइम में भरना बंद हो चुका है, अब सारी चीजें आउटसोर्सिंग में हो रही है। तो आई मीन टू से फॉर ऑल दीज थिंग्स वी नीड participation of more and more people in higher education. That's why, for that purpose, we want to bring all those who are outside the Ministry of Higher Education. जो भी है, किसी भी कारण से उन्हें हमें लाना है। अब इस सेशन में मैं बात 2-3 चीजों पे करूंगा। फर्स्ट थिंग, डाइवर्सिटी को लेकर आज हमारा स्टेटस क्या है, हम कितने लोगों को हमारे साथ ला पाए हैं इन हायर एजुकेशन। सेकंड थिंग, व्हाट एनईपी टॉक्स अबाउट इंक्लूडिंग मोर एंड मोर पीपल, क्या करना चाहिए ऐसे एनईपी कहते हैं। एंड थर्ड थिंग, दैट इज लास्ट पार्ट, देयर आई विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस इन इंक्लूडिंग दिस पीपल इन हायर एजुकेशन। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैडम, दिस इज द डेटा taken from AISHE report, All India Survey of Higher Education, AISHE. This is a report published on annual basis by the, sorry, ये क्या हो गई, by the Ministry of Education, Department of Higher Education, Government of India. पिछले महीने तक हमारे पास सिर्फ 21-22 का ही डाटा था, लेकिन अब लकीली लास्ट मंथ वी हैव गॉट डेटा ऑफ 2 more years, 22-23 का भी आ गया और 23-24 का भी आ गया। अब मैंने आपके सामने हमारे हायर एजुकेशन का एक सेटअप रखा है, कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने एफआईआईज हैं, उनकी संख्या क्या है, उनका परसेंटेज क्या है और कितने लोगों को एनरोल कर पाए। चलो मैं पीछे की बात नहीं करूंगा, आई विल टॉक अबाउट द करंट, द लेटेस्ट ईयर, नॉट करंट ईयर बट द लेटेस्ट ईयर दैट वी हैव विद अस। मैडम 24-25 का हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, 25-26 का नहीं है, हमारे पास लेटेस्ट है 23-24 का। एंड एज पर दैट रिपोर्ट, इन दैट ईयर मैडम वी हैव हैड 1289 यूनिवर्सिटीज, 1289 से 1289 यूनिवर्सिटीज आते हैं। उसमें से मैडम 254 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 479 स्टेट यूनिवर्सिटीज है, 10 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है और 546 these are private universities. This is the biggest number. सेंटर के 256 है, स्टेट के 479 लेकिन प्राइवेट कितने यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, 546। फिर बात करते हैं कॉलेजेस की। वी हैव 48,246 कॉलेजेस, उसमें से 7,946 गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब मैडम थोड़ा यहां देख लेना, लास्ट ईयर, पता नहीं क्यों मुझे आपको दिखा नहीं पा रहा मैं ठीक से, इसका 1 मिनट है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका। चलो, नो, आई एम ऑल्सो रादर शॉक टू सी हियर, मुझे भी थोड़ा शॉक लग रहा है। रवि रंजन जी अगर आप देख रहे हैं तो देख लेना, टेबी चोस में गवर्नमेंट कॉलेज का फिगर है 7,946, जो 22-23 में 9,259 था और 21-22 में 9,207 था। ऐसा क्या हुआ कि एक साल में हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या कम हो गई, या बंद हो गए, या फिर उसको ऑटोनॉमस कर दिया, या फिर उनको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर लिया, देखने वाली बात है। चलो, देन वी हैव 5,994 गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस। दीपा जी आप कहाँ से, महाराष्ट्र से या बिहार से हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा।
अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को, शायद शायद राइट ऑफ म्यूटिंग एंड अनम्यूटिंग इज विद एडमिन। चलो कोई बात नहीं, आई कैन रीड योर लिप्स। यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट? Right? You are from Maharashtra, Bihar. Okay. I think in Bihar, most of the colleges are government colleges. Are there some colleges which management is private but government aid is there? Maybe some colleges are there. So such number in the country is 5,994 and completely private unaided colleges are 32,527, जो कि उसका टोटल कॉलेज में उसका शेयर 70%। मतलब 70% कॉलेजेस प्राइवेट मैनेजमेंट के भरोसे हैं। फिर बात करते हैं SAI, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट। ऐसे इंस्टीट्यूट जो उच्च शिक्षा का पार्ट है लेकिन किसी विश्वविद्यालय से एफिलिएट नहीं है। एग्जाम्पल, अ पॉलिटेक्निक कॉलेज, a diploma in pharmacy college, diploma in education college, diploma in nursing college, diploma in pathology courses, all these paramedical, nursing, hotel management, D.Ed, polytechnic, these are all called SAI. उसका फिगर भी हमारे पास 15,221 है। लेकिन देख लेना इस सर्वे में कितने कॉलेजेस ने भाग लिया है, यहाँ देख लेना थोड़ा सा। 15,000 में से मैडम 11,787 ने लिया है। इसका मतलब बाकी 4,000 कॉलेज की हालत क्या होगी, आप यू कैन इमेजिन दैट। एनीवे, इन ऑल दीज यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड SAIs, इन दिस रिपोर्टिंग ईयर द टोटल एनरोलमेंट इज 4.50 करोड़। 4.5 करोड़ हमारे पास बच्चे 23-24 में उच्च शिक्षा में एनरोल्ड, और हमारा 23-24 का GR है 30। मैडम थोड़ा ये छोटा है क्या बोलते फॉन्ट, क्योंकि आपको आके फाड़ फाड़ के देखना पड़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा सा छोटा होगा ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो GR इज 30 ओनली। मतलब रविरंजन जी, हमारे पास अगर 100 बच्चे हैं 18 to 23 के एज ग्रुप में, उच्च शिक्षा का एलिजिबल एज ग्रुप होता है 18 to 23। मान लीजिए हमारे देश में 18 to 23 के एज ग्रुप में 100 बच्चे हैं, उसमें से 30 बच्चे उच्च शिक्षा में उस साल में आ पाए थे, बाकी के 70 बाहर हैं। 30। अब थोड़ा ये तो जनरल हो गए, मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। अभी ये डाइवर्सिटी की बात यहां बताते हैं। चलो हम रिसेंट ईयर की बात करते हैं, हम पिछले 2 सालों की बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा 23-24 में हमारे देश में पूरा एनरोलमेंट था 4.50 करोड़, 4.5। ये 30% है सर। अगर 4.5 करोड़ 30% है तो 100% कितना होगा सर? नेचुरली 14 करोड़ के आसपास होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? अगर 30% 4.5 करोड़ है तो उसका 100% कितना होगा? लगभग 17 करोड़। कितना होगा वो? लगभग 17 करोड़ के आसपास। नहीं, 17 करोड़ कैसे होगा? 4 त्रिकम 12, 12 और 1.5, 13.5 ना 14 के आसपास होगा इसमें। मेरा मैथमेटिक्स डिटेल में थोड़ा वीक है, लेकिन रफली चल जाता है ऐसा काम। तो लगभग 14 करोड़ के बच्चों से सर हम 4.5 करोड़ बच्चे ले पाए, मतलब 70% बाहर। अब उसमें भी देख लेना सर, ये टोटल में 2.3 करोड़ मेल है एंड 2.2 करोड़ फीमेल है। मतलब हम अगर जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे तो उच्च शिक्षा में 10 लाख महिलाएं पुरुषों से कम है। मतलब यहीं से शुरू हो जाता है।
एक्सक्लूजन यहीं से शुरू हो रहा है सर। कितना है? 2.2 करोड़। अब थोड़ा सा मैंने जैसे कि कहा आपसे कि दिस SCDGs आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट ग्रुप्स। कुछ एससीज में मिलेंगे आपको, कुछ एसटीज में मिलेंगे, कुछ ओबीसीज में मिलेंगे, कुछ माइनॉरिटीज में मिलेंगे, कुछ नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, कुछ पीडब्ल्यू मिलेंगे, कई और जगह में। अब हम क्या करते हैं यहाँ कि कैटेगरी वाइज उनका देख लेते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन कितना है। अब ये देख लेना सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक अबाउट एससी कैटेगरी। आउट ऑफ 4.50 करोड़ हमारे पास एससी से आने वाले स्टूडेंट थे 69.7 लाख। 69.7 लाख। और सर देख लेना फीमेल में कितना है? 35.1 लाख। यहां देख लेना सर 50% से ज्यादा है महिलाएं। हो सकता है कि बहुत कम ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है ना? यू कैन इमेजिन दैट। एंड उनका परसेंटेज टोटल एनरोलमेंट में 15.5। हमें भी देखना पड़ेगा कि 4.5 करोड़ में उनका हिस्सेदारी कितनी है ना? उनकी हिस्सेदारी कितनी है। फिर बात करते हैं एसटीज की। ट्राइबल्स 28.2 लाख। कितने? 28.2 लाख। और सर फिर देख लेना महिलाओं की संख्या वहां फिर यहां पुरुषों से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है। देख लेना 15.1, 15.1 लाख। देखो 28 का 50% कितना होना चाहिए? कायदे से 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बड़ी है। और आगे जाना सर, और उनका पॉपुलेशन सॉरी उनका शेयर कितना है? ये 6.4%, बिलो द एवरेज। फिर बात करते हैं हमारे पॉपुलेशन के सबसे बड़े हिस्से की, दैट इज ओबीसी। और ओबीसी का एनरोलमेंट सर हमारे पास 1.80 है। 1.80। और उसमें फीमेल का 90.1 लाख लगभग आता है, यहां बराबरी में चल रहा है। और उनका शेयर एनरोलमेंट में 40%। फिर बात करते हैं माइनॉरिटीज की। ऑल टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, जू, ऑल काइंड ऑफ माइनॉरिटी। उनका शेयर है सर 33.3 लाख। GR नॉट अवेलेबल। और उनका शेयर सारे लोगों का 38। फिर बात आती है स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। लगभग हमारे नॉर्थ ईस्ट में 7-8 बड़े बड़े स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय एंड अदर थिंग देयर। तो वहां उनका एनरोलमेंट बहुत कम है। मैडम कहाँ गई? कोई है कि सारे निकल गए? हेलो, हेलो सर। हाँ कहाँ गए बाकी सारे लोग? मुझे तो किसी का भी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हाँ, थैंक यू मिश्रा मैम, थैंक यू। कोई ना कोई मेरे सामने बना रहना चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू विजय जी। तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे बड़े बड़े स्टेट है, आसाम, मेघालय, छोड़े सर, वहां से सिर्फ 13.2 लाख पीपल आते हैं। और रही बात फॉरेन स्टूडेंट की, हमारे पास मात्र 58,134 फॉरेन स्टूडेंट्स। खुशकिस्मत ये, यहाँ तो 40,000 ही थे, इसके पीछे 46,000 ही थे। कुछ फिगर यहाँ बढ़ा है। देखो 4.5 करोड़ में फॉरेन स्टूडेंट कितने हैं? 58 लाख। कितना परसेंट होगा सर, आप देख लेना थोड़ा कुछ। आई मीन नॉट, आई थिंक 58 लाख में 58,000 है सर। 5% होगा ज्यादा नहीं। सो दिस इज द पिक्चर। ये हमारे डाइवर्सिटी के हालात हैं। मतलब देखो, शायद इसका GR यहाँ नहीं है, GR दिया नहीं शेड्यूल में। 21-22 में एससी का GR था 25.9।
मतलब 76% बाहर थे एससी। फिर एसटी की बात करेंगे, उनका जीआर था 21.2, मतलब अगेन 79% वेर आउटसाइड। और ओबीसी माइनॉरिटी अदर ग्रुप का हमारे पास जीआर नहीं है। उसका क्या कारण रहा होगा मैडम दीपा जी? हमारे पास एससी सॉरी ओबीसी माइनॉरिटीज एंड अदर पीपल का जीआर नहीं है। क्या कारण रहा होगा? कैन यू इमेजिन? कारण ये है, मैंने आपको बताया कि जीआर क्या होता है। 18 to 23 के एज ग्रुप में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से जितने लोग आ पाते हैं दैट इज जीआर। अगर हमारे पास 100 है, 100 में से 26 आ गए तो 26 इज आवर जीआर। अब हमारे पास मैडम ये हमें पता है कि हमारे पास एससीज का पॉपुलेशन कितना है अप्रोक्सीमेटली, एसटीज का कितना है हमें पता है, लेकिन ओबीसी का कितना है, माइनॉरिटीज का कितना है, हमें कोई अंदाजा नहीं। इसका कारण ये है कि हमारे सेंसस में ओबीसी का काउंट नहीं किया जाता, हमारे सेंसस में माइनॉरिटीज का काउंट नहीं किया जाता, एससी एसटी का किया जाता है। इसलिए आजकल हम पॉलिटिक्स में देखते हैं कि कुछ पार्टियां कास्ट सेंसस की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे देश में ओबीसी कितने हैं एग्जैक्टली, हमारे देश में माइनॉरिटीज एग्जैक्टली कितने हैं और बाकी सारे लोग कितने। दीपा जी, आपको ताजुब होगा कि हमारे देश में ये तो हमें पता है कि किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम का पॉपुलेशन कितना है, हमें ये पता है ना? किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, लेकिन हमारे पास देश लेवल पे हमें पता नहीं कि हमारे पास ओबीसी कितने हैं, हमारे पास माइनॉरिटीज कितने हैं। मतलब हमें पता ही नहीं है कि कितने में से कितने आ गए हैं, कितने आ गए ये पता है लेकिन कितने में से आ गए ये पता नहीं, इसलिए जीआर इज नॉट अवेलेबल हियर। नाउ लेट मी मूव ऑनवर्ड। ये यही फिगर था शायद, हाँ यस, अब यहाँ सर और क्लियरली है, यहाँ देख लो। हाँ मैं आखिर आखिर वाला देख लेना थोड़ा ना, ये लास्ट वाला। जैसे कि मैडम मैंने आपको बताया कि 58,134 हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। ये कितने देश से मैडम? 173 देश से। उसमें ज्यादा 24% नेपाल से, सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास नेपाल से आते हैं। उसके नीचे 5.9 फ्रॉम यूएस, इट इज रादर वंडरफुल, इट इज रादर सरप्राइजिंग। 5.9% बच्चे यूएस से, 5.9 फ्रॉम बांग्लादेश, 3.4 फ्रॉम भूटान, एंड व्हाट इज दिस 7% फ्रॉम यूएई, 5.5 फ्रॉम नाइजीरिया, एंड 4% शायद ये 4% फ्रॉम जिम्बाब्वे। इसका मतलब मैडम हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट्स में ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। हमारे पास आने वाले फॉरेन स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा साउथ एशिया या फिर एशिया से। इसमें अगर आप सिर्फ यूएसए को छोड़ती है तो इस 5-6 देश के लिस्ट में कोई भी यूरोपियन कंट्री नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहां से आते हैं हमारे पास? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यूएई एंड सो। ठीक है, अब यहां जरा प्रॉपर्ली था देखो, यार मैंने वो गलत लगाया था। ये हमारा एससी का जीआर सर 17.8% है, सॉरी 27.8 है एससी का। इसका मतलब और क्या निकलता है सर कि लगभग 72.2% आउटसाइड। फिर एसटीज का 22.8 है, अगेन इसका मतलब है 71.2% एसटीज आर आउटसाइड। बेताजुब की बात है सर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो प्योरली ट्राइबल पॉपुलेटेड है। आपका झारखंड आपके पड़ोस में मैडम, ये प्योरली ट्राइबल है। छत्तीसगढ़ ट्राइबल है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट ट्राइबल है, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी कुछ पॉकेट बिल्कुल ट्राइबल है। मतलब हमारे देश में एसटीज का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, एंड वी मे कॉल दैट दे आर द नेटिव्स ऑफ दिस कंट्री।
उनका अभिनय नहीं हो चुका है। इन लोगों का मैडम सिर्फ 6.4 कंट्रीब्यूशन है। फिर बात करेंगे, महेंद्र सिंह मैंने कहा है ओबीसी का जीआर हमें अवेलेबल नहीं है, माइनॉरिटीज का भी नहीं है, स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट का भी नहीं है कि तो बात नहीं आती। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखो मैं इसको शायद बाद में सुधारना चाहूंगा कि 21-22 का डेटा है। देखो मैडम, कहा जाता है कि मुस्लिम इज द मेजर माइनॉरिटी इन इंडिया। मुझे दिक्कत इस माइनॉरिटी से वर्ड से है, उसके चलते उनको बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती है। आई मीन टू से इट इज अ बिग साइज पॉपुलेशन इन इंडिया। कहा जाता है कि 15 to 20% पॉपुलेशन इन इंडिया बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी। 15 to 20%, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, 19 हो सकती है। मैडम देख लेना, आज के रेट में अगर हमारी आबादी 140 करोड़ है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर हमारी आबादी 140 करोड़ है तो उसका 20% कितना निकलेगा मैडम? 28 करोड़ निकलेगा, 28 करोड़ निकला, सीधी सी बात है। और मान लीजिए आपकी 28%, 28 करोड़ में से 40% क्या निकलता है? हमारी युवा आबादी 40% निकालिए। अब रवि रंजन जी, आप अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाइए कि 28 करोड़ का 40% कितना निकलेगा? 14 चौक 56, 5 करोड़ 60 लाख। Am I right? उसका 40% 14 सर, 40 नहीं बोला था आपने, 40 12 के आसपास, 12 के आसपास होगा। एक मिनट, 28 करोड़ का 40%, 56, हाँ 11, 11.5 का निकलता है, 11, 11.5 निकलता है, 5.6, 11.20 एग्जैक्टली। मतलब 10 करोड़ पकड़ के चलिए, कम ज्यादा। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के 10 करोड़ बच्चे एलिजिबल एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं एजुकेशन के, लेकिन हाँ कितने पाए सर यहाँ? 21 लाख। मैडम दीपा जी, आप उसका परसेंटेज निकालना। 10 करोड़ में से अगर सिर्फ 28 लाख आ चुके हैं तो ये जीआर कितना बनेगा? मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 या 3% बनेगा, क्योंकि उसको 10% निकलने के लिए भी लगभग कितना होगा सर? देख लेना, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। 28 करोड़ में से सिर्फ 21 लाख आ चुके हैं हमारे पास, तो कितना बनेगा? व्हाट यू मे थिंक ऑफ। बाकी का देखना, ये दोनों मिला के 30 लाख थे, बाकी माइनॉरिटीज का 9 लाख है हमारे पास। और जैसे कि मैंने कहा, पर्सन विद डिसेबिलिटी 88,000। सर ऐसी ऐसी डिसेबिलिटीज है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। हमारे लिए डिसेबिलिटी क्या होती है? हाथ पाँव ये कुछ ठीक ना होना, आंख से कुछ ना दिखना, ये हमारी प्रोमिनेंट डिसेबिलिटी है। सर अगर मैं कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूं तो फिर भी मैं डिसेबल। अगर मैं कुछ चीजें याद नहीं कर पाता हूं तो दैट इज अगेन माई डिसेबल, क्योंकि उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें उसमें। देयर आर सम 6 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। सर हम में से कुछ लोगों को पता ही नहीं कि मैं किसी डिसेबिलिटी से बिलोंग करता हूं। इतने बड़े देश में सिर्फ 88,000 लोग पीडब्ल्यूडी से, सिर्फ 88,000। क्वाइट वरीसम मैटर। और जैसे मैंने आपको बताया, हाँ ये देखो नया आया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, जो नई कैटेगरी आई ना मैडम, 10% रजिस्ट्रेशन, 10% रिजर्वेशन वाली। रवि रंजन जी, ये तो बहुत आला अजब कहानी है। इसकी इनकम सीलिंग आपको पता है कितना? 8 लाख, 8 लाख। 8 या 7, राइट, 8 मान लीजिए। अगर कोई फैमिली 8 लाख कमाती है साल का, तो महीने का कितना बनेगा उसका? 70,000 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि 70,000 कमाने वाले को हम गरीब कह पाएंगे। 70,000 कमाने वाली फैमिली किसी भी एंगल से गरीब नहीं रहेगी सर। ये मतलब क्या बोलता हूं मैं, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। गरीब तो उसको कहा जाएगा कि भाई जो मुश्किल से 10-15,000 कमा सकता है साल में, सॉरी महीने में, उसकी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं होती।
70,000 कमाने वाले को गरीब कहते हैं हमारी सरकार की भाषा में, और बीपीएल की कहानी तो बिल्कुल अलग है। अब एक बार देख लेना बीपीएल का क्या क्राइटेरिया है, बीपीएल किसको कहा जाता है, छोड़ो। एंड एज आई टेलिंग यू, मैंने जैसे कहा कि फॉरेस्ट रोड हमारे पास नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी ये मेरा थोड़ा इनकम्प्लीट है क्योंकि कल ही मैंने वो नया डेटा दिया है। अब टीचिंग पोजीशन में क्या हालात है सर हमारे पास? मेरे पास 21-22 का डाटा था सर, जैसे कि मैंने कहा हमारे पास लगभग 16 लाख टीचर थे उच्च शिक्षा में काम करने वाले। 21-22 में 16 लाख थे, हो सकता है कि अभी ये 17,03,000 बन चुके हैं अभी 23-24 में। 1,73,000, एक जीरो कम पड़ गए शायद यहाँ, है ना। देखो 15 लाख में से 90,000 पुरुष थे और 70,000 मान लीजिए, 7 लाख मान लीजिए, 9 लाख पुरुष है और 7 लाख वुमेन नहीं है। मैडम बहुत बड़ा गैप है यहाँ टीचिंग पोजीशन में, मेल फीमेल में बहुत बड़ा गैप है, लगभग 20 लाख का है। दिस इज द जेंडर इनइक्वालिटी। फिर बात करते हैं एसिड की सर, इसमें 1,48,000 है, इसमें से मेल है 92,000 एंड फीमेल है 56,000। यहाँ भी बहुत बड़ा है मैडम, टीचिंग पोजीशन में महिलाएं बहुत कम है। आपको उठ खड़ा होना पड़ेगा, हाथ में झंडा लेना पड़ेगा। एसटीज में देख लेना 41,000, मेल 23,000, फीमेल 28,000। ओबीसी में 5,16,000, उसमें से लगभग 3 लाख पुरुष है। बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है। और सर बहुत जरूरी है क्या, मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ? मैं किसी सेशन में हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ, ये थैंक यू। हाँ, तो 3 लाख मैडम, 5,16,000 में 3 लाख पुरुष है और 2-2.25 लाख महिला है। यहां भी देख लेना मैडम, बहुत बड़ा गैप। अब रिजर्वेशन को आपको तो मतलब लड़ के लेना पड़ेगा, ऐसे तो लोग देंगे नहीं। ओ रविरंजन जी, आपको पुराना गाना याद है? मेरे ख्याल से नया दौर मूवी में था, दिलीप कुमार जी का था, जब हम मेहनत कश वाले दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। सो आई मीन टू से कि मैडम बहुत बड़ा हिस्सा बनता है लेकिन मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा आपको क्रांति करनी पड़ेगी है। अब तो एंड दिस इज द फिगर फॉर, मैंने सिर्फ एक निकाला था, बाकी निकालना बाकी था मेरा। वही बात है सर नॉन टीचिंग पोजीशन की। मैं डाइवर्सिटी सिर्फ एनरोलमेंट में नहीं देख रहा हूँ, मैं डाइवर्सिटी देख रहा हूँ टीचिंग पोजीशन में, मैं डाइवर्सिटी देख रहा हूँ नॉन टीचिंग पोजीशन में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं बन जाते तब तक हम अपने जो पिछड़े उनको साथ नहीं ले पाएंगे। आपको याद होगा रविरंजन जी, अम्बेडकर जी ने कहा था कि आप शासन करने वाली जमात, जब तक पॉलिसी मेकिंग के अधिकार आपको नहीं मिलते तब तक आप अपने हित के लिए पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। इन द सेम वे आई एम ट्राइंग टू टॉक हियर कि टीचिंग पोजीशन में कितनी डाइवर्सिटी है, नॉन टीचिंग में कितने, देख लेना। ये लगभग 12 लाख थे सर नॉन टीचिंग में, मैं 21-22 की बात करूंगा, उसमें 6,80,000 मेन और मैडम 5,27,000। मुझे लगता है इस सेशन होने के बाद मैडम घर पे जाने के बाद क्रांति लाने वाली है, बिकॉज दिस रियलिटीज आर बिफोर हर। The same is true in case of 22, 23 and 23, 24 also. देख लेना मैडम, यहाँ 15,82,000 बन चुकी है, उसमें से 9,27,000 मेल है और 6,55,000 महिला है। फर्क कितना है देख लेना है मैडम, लगभग मेरे ख्याल से 2.5 लाख का फर्क, मेल फीमेल नॉन टीचिंग पेशेंट। अब थोड़ा सा आगे आते, ये शायद इसका डिस्ट्रीब्यूशन था। अब क्या कारण रहे होंगे मैडम, थोड़े इस पे भी बात करते हैं। ये
एनरोलमेंट में नॉन इंक्लूजन के कारण क्या रहे? उसके लिए किसी भी रॉकेट साइंस की हमें जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। सबसे पहला कारण मैडम, हमारे बहुत सारे लोगों को, पॉपुलेशन को यही पता नहीं है कि हायर एजुकेशन लेने से क्या फायदे, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, नहीं है पता। और पर्टिकुलरली जिस उस फैमिली में जहां से फर्स्ट जनरेशन लर्नर आता है, अगर दीपा जी आपके पिताजी पहले एजुकेटेड है तो आपके लिए ये ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि सो मेनी थिंग यू ऑलरेडी रिसीव्ड है। लेकिन जिस फैमिली में कोई पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं मैडम हायर एजुकेशन किस चिड़िया का नाम है और वो कहाँ उड़ती है, नहीं पता। उनके लिए शिक्षा मतलब क्या है? गांव में जहां तक शिक्षा अवेलेबल है वही उनके लिए शिक्षा है। अगर गांव में 10वीं तक स्कूल है तो वही शिक्षा है। गांव में 12वीं तक स्कूल है, वही उनके लिए शिक्षा है। हायर एजुकेशन उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि पता ही नहीं है। एंड दे डोंट नो व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर देयर। मैडम, जितनी सुविधाएं, जितनी फैसिलिटी, जितनी फेलोशिप हमें हायर एजुकेशन में मिलती है, उतनी स्कूल शिक्षा में नहीं मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीपल डू। मैं आपको और एक बात बता दूं, जैसे कि मेरे बायो में पढ़ा गया, आई वर्क एज ए कॉलेज प्रिंसिपल फॉर 6 ईयर। हमारा डिग्री कॉलेज था, साथ में जूनियर कॉलेज भी था। तो बहुत सारे पेरेंट्स आते थे मैडम अपने चाइल्ड को मिलने। हम बोलते थे, आपके बच्चे का नाम क्या है, ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? रवि जी वो कहते थे 13वीं में पढ़ता है, 14वीं में पढ़ता है। मतलब दे डोंट नो वेयर द स्कूल एजुकेशन एंड एंड वेयर द हायर एजुकेशन बिगिन। डोंट। वन मोर, मैं उनकी बात छोड़ो मैडम, मैं बच्चों की बात करता हूँ। हम जब बच्चों को, वो बच्चा कुछ मांगने के लिए आता था, हम बोलते चलो एप्लीकेशन लिख के ले आओ। तो पता है वो क्या लिखता था? सेवा में, अब वो मराठी में लिखता था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। सेवा में माननीय मुख्याध्यापक। कॉलेज के प्रिंसिपल को भी वो मुख्याध्यापक लिखता था। इसका मतलब मैं सिर्फ कहना है, मैं प्रूव ये करना चाह रहा हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि हायर एजुकेशन क्या चीज है, और जो खुद एनरोल्ड है उनको भी पता नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। द सेकेंड थिंग, कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन। हाँ, ये सबसे बड़ी कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन। कभी कभी मजाक में हम कहते कि भाई बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए, बच्चों को पालना मुसीबत है। क्यों कहते हैं? अरे सर, आप आपके बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भी एडमिट करना चाहते हैं ना, फर्स्ट या केजी में, एलकेजी में, तो 20-25 हजार तो आपसे डोनेशन लेंगे, फिर साल की ट्यूशन फीस, फिर बच्चों का यूनिफॉर्म, उसके स्कूल, स्कूल बस, 1 लाख रुपए तो आपका आराम से बच्चे का एलकेजी में ही निकल जाए, एलकेजी में निकल जाए। मैं तो कभी कभी मेरे बेटे को कहता हूँ मैडम दिवेश, कि बेटा जितने पैसे में मेरी पूरी शिक्षा हो चुकी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर मास्टर तक, उतना पैसा तो मैं आपके प्राइमरी एजुकेशन में डाल चुका। एंड इट इज ट्रू। आप देख लेना, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे अगर आप शादीशुदा है तो। एंड यू कैन इमेजिन क्या फीस हुआ करती सर गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल में। मैडम, यू विल बी सरप्राइज टू नो, मुझे याद है जब मैं चौथी में था तो मेरे ख्याल से 50 पैसे या 1 रुपी पर मंथ था वो, 50 पैसे। आज 50 पैसे मैडम, आज 1 रुपया तो भिखारी भी नहीं लेते। आज भिखारी भी 10 रुपए का कॉइन मांगता है, 5 रुपया भी नहीं लेता हूँ। हम उतनी महीने की फीस दिया करते थे। कहने का हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज ग्रोइंग, but unfortunately the figures of our economy say that the income of the people is going down. These are two contradictory things, quite opposite things. महंगाई बढ़ रही है तो उच्च शिक्षा का भी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन लोगों का इनकम कम हो रहा है।
और जब किसी फैमिली में मैडम 2-3 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और उसका इनकम लिमिटेड है, तो नेचुरली वो सारे के सारे बच्चों को कॉलेज में नहीं भेज सकते। उनको एक बहुत ही बिटर डिसीजन लेना पड़ता है, इसमें से कौन कॉलेज जाएगा और कौन नहीं जाएगा। दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजंस ऑफ नॉन। थर्ड थिंग मैडम, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस एंड लैंग्वेज बैरियर्स। हाँ, इस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। जिस रिपोर्ट से मैंने ये सारे फिगर लिए हैं मैडम, ये ऐसी रिपोर्ट, ये बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। जैसे कि मैंने कहा देश में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, देश में कितने कॉलेजेस हैं, और बाद में उसका डेटा उन्हें कलेक्ट कैसे किया है मैडम, वो हर कॉलेज से डेटा लेते हैं साल भर, और बाद में उसको रिपोर्ट में कंपाइल करके पब्लिश करता है। ये स्टेट वाइज डेटा भी है। और एक जगह एक इंफॉर्मेशन आती है मैडम कि हमारे देश में 1 लाख बच्चों के लिए कितने कॉलेजेस अवेलेबल है। रवि रंजन जी, ट्राई टू लिसन टू मी केयरफुली। ये रिपोर्ट हमें एक जगह ये भी बताती है कि हमारे देश में 1 लाख युवाओं के लिए कितने कॉलेजेस। 21-22 का डेटा हमारे पास ये है सर कि हमारे देश में 31 कॉलेजेस हैं नेशनल लेवल पे। कितने? 31 नेशनल लेवल पे। लेकिन स्टेट टू स्टेट ये फिगर डिफर हो जाता है। सॉरी, महाराष्ट्र में 34 कॉलेजेस है। 21-22 में महाराष्ट्र में 1 लाख बच्चों के लिए 34 कॉलेजेस थे। लेकिन आप मैडम जैसे जैसे साउथ जाओगी वैसे वैसे कॉलेज की संख्या बढ़ जाती है। कहीं 40 हो गए, कहीं 42 हो गए, कहीं 60 हो गए 1-1 लाख बच्चों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैडम, जैसे जैसे हम नॉर्थ इंडिया में आते हैं, सेंट्रल इंडिया में आते हैं मैडम, द थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। नाउ मैं आपसे बात शेयर करना चाहूंगा, यू विल करेक्ट मी। ये रिपोर्ट बताता है मैडम कि बिहार में 10 लाख बच्चों के लिए 10 कॉलेजेस, सॉरी 1 लाख बच्चों के लिए 10 कॉलेजेस। दिस इज द गवर्नमेंट रिपोर्ट 21-22 का। आगे का मैंने अभी उसको ऐड नहीं किया है। वो रिपोर्ट मुझे बताता है कि बिहार में 1 लाख बच्चों के लिए सिर्फ 10 कॉलेजेस। नेशनल लेवल पे 31, साउथ में 30 से आगे है सारा। बिहार में कितने हैं? 10। और नेचुरली उसमें से बहुत सारे कॉलेज कहाँ होंगे? सिटी में होंगे, क्योंकि सिटी में ज्यादा कॉलेज होते हैं। मैं आपको बता दूं, बेंगलोर एक ऐसा शहर है सर जहां 1200 कॉलेजेस है एक सिंगल शहर में। अकेले बेंगलोर हिंदुस्तान का एकमात्र सिटी है जहां 1200 कॉलेज एक सिटी में। मैं कहना ये चाह रहा था कि तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉलेजेस इन द सिटी, और बाकी के जो बच्चे हैं वो फैले एरिया में। अब जो मान लीजिए कि बिहार में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 5000 कॉलेजेस, उसमें से मान लीजिए कि 3000 बड़े बड़े सिटीज में है। अब बच्चे कितने हैं? 2000 कॉलेजेस। बिहार तो बड़ा स्टेट है, आबादी के हिसाब से मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा स्टेट तो होना चाहिए बिहार। आफ्टर यूपी एंड महाराष्ट्र पर बिहार विल बी द थर्ड, में भी बंगाल, कुछ भी हो। तो नेचुरली बचे हुए कॉलेज एक दूसरे की दूरी पे है ना। अनुराग इस तरह है, आरवी अनुराग कब तक फ्री होगा? 8 बजे। तो नेचुरली रेवरेंजन जी बाकी के कॉलेज दूर दूर बसे हुए। अभी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी मैटर करता। मैडम दीपा जी, आज भी हमारे देश में एक मोमेंट पे पेरेंट्स ट्रेडिशनल हो ही जाते हैं, एंड पर्टिकुलरली इलिटरेट पेरेंट। लड़कियों के बारे में तो हमेशा देखा जाता है कि जैसे ही वो पॉवर्टी पे आ जाती है, बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल जाना उसका बंद कर देते हैं। उसको एमसी कहते, पीरियड कहते। मान लीजिए थोड़े से उदार हो गए वो, तो तभी तक पढ़ाएगी जब तक उस गांव में शिक्षा की व्यवस्था है। 10वीं है, 12वीं है। बहुत सारे पेरेंट्स मैडम अपने लड़कियों को अपने गांव से 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर भेजना नहीं चाहते एट वंस।
सेकंड थिंग, चलो मान लीजिए वो भेजने के लिए तैयार भी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसका कॉस्ट कौन देगा? मुफ्त में तो नहीं होता ये सारी चीजें। मैडम दीपा जी, आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए खुद को जरा, आप कैसे बोलते मुझे सुनना भी है। कि महाराष्ट्र में भी ना मैडम स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट सर्विस है, हम जिसको गवर्नमेंट बसेस कहते हैं, और वो बसेस महाराष्ट्र में एजुकेशन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। हमारे यहाँ मैडम सुबह सुबह ना कुछ बसेस खाली जाएगी और बच्चों को लेकर सिटी में आए, फिर शाम को वो बच्चों को छोड़ने जाएगी, फिर खाली आएगी, लेकिन वो सर्विस देती। और वहां आपको 10-12 तक को कुछ भी नहीं देना लड़कियों को, बाद में 50% तो कभी 50% कंसेशन है। मैं ये जानना चाह रहा था मैडम, मैडम जी शायद निकल गई, मैं ये जानना चाह रहा था कि बिहार में स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस है क्या, जहां लड़कियों को फ्री या कंसेशन के लेवल पे ट्रैवल करना पड़ा? है सर। है ना, कंसेशन देते हैं वो। नहीं मैं है फिर सर। पूछ रहा हूँ, मैं फिर पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट की सर्विस है क्या? हाँ गवर्नमेंट की है सर, पिंक बसेस नाम का इलेक्ट्रिक बसेस हाँ, चलती है। हमारे पास उनको हम लालपरी कहते हैं, हाँ हमारे पिंक पास एक बसेस वर्ड है चलती है, लालपरी। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। बहुत अच्छी बात है। फिर एक ही बात है कि वहाँ कॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, वहाँ फिर कॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि देखो ये बाकी सारी गवर्नमेंट की स्कीम है ना सर, ये 1,500 ले लो, वो 2,000 ले लो, ये राशन ले लो, वो सिर्फ जीने के लिए हमें सपोर्ट करती है, बट एजुकेशन इज एम्पावरमेंट। एजुकेशन से हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। बाकी 10-5 हजार से हमारा कुछ नहीं होना है, 10-5 हजार से कुछ नहीं होना है, सिर्फ कुछ चीजें खाने के लिए आ सकती है, लेकिन शिक्षा के लिए काम नहीं आएगा। तो मेरा कहना यह था कि in the state like Bihar or somewhere else also, when the colleges are located at the distant position, it is very difficult for girls and particularly from children from the poor families to travel. ये भी एक रीजन। दूसरा है लैंग्वेज बैरियर। सर हमारे यहाँ बच्चा डिग्री में कब आता है? जब वो 12वीं पास करके आता है ना, HSC, वॉट एवर वर्ड यू यूज, इंटर कहे HSC कहे। And you know that any board exam in India you cannot pass without passing English. एक कंपल्सरी पेपर होता है मैडम, 10th में होगा, 12th में होगा, और 10th में 12th में टिकट ही नहीं मिलती हमें, है ना, हमें तब कैरी फॉरवर्ड करने का परमिशन नहीं होता। मतलब बच्चा जब 10वीं के in India, English is the compulsory subject in all exams. English is not our native language. इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज अब नहीं मानता हूं मैं, इंग्लिश की दायरे में चाहे इंडियन, बट इट इज नॉट नेटिव वन। हमारे किसी भी फैमिली में इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, वो बोलते हो गए ऐसे, लेकिन मातृभाषा नहीं। ऐसे हालात में यू कैनॉट एक्सपेक्ट ऑल पीपल टू हैव वर्केबल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। और हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे 12वीं में 10वीं में इंग्लिश के चलते फेल हो जाते हैं, और एक बार वो फेल हो गए सर, फिर उसमें से बहुत कम बच्चे फिर प्रयास करेंगे और फिर उच्च शिक्षा में आएंगे। आई मीन टू से हियर सर, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम अ बैरियर हियर। मैं इसको स्पीड ब्रेकर नहीं कह रहा हूं सर, उसको मैं बैरिकेड ही कह रहा हूं, उसको बैरियर ही कह रहा हूं। मतलब लैंग्वेज बैरियर भी उच्च शिक्षा में बहुत सारे बच्चों को आने से रोकता है। देन सबसे ज्वलंत इशू ये है, why people don't want to get enrolled? जैसे कि मैडम मैंने शुरुआत में बताया, चपरासी की जॉब खत्म हो गया, जो कुछ बचे वो भी बहुत कम भर्तियां निकलती है, भर्ती निकले तो पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक नहीं हुए हो तो रिक्रूटमेंट जल्दी नहीं होती, मेनी मोर थिंग्स आते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, प्लीज, ये शुरू से होता आया है और होता रहेगा ये। मैं कहना ही चाह रहा था मैडम, और एक बात बताऊं मैं कि
4 करोड़ 50 लाख बच्चों में से मैडम लगभग 80% बच्चे हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही है, सिर्फ यूजी प्रोग्राम में से। पीजी में आगे बहुत कम जाते हैं, 50%। और उस 50% में भी मैडम हम देख लेंगे कि 60% बच्चे बीए बीकॉम बीएससी में। और हम जानते हैं आज कि बीए बीकॉम बीएससी पढ़ने वालों को जॉब की पॉसिबिलिटी बहुत है। और हम ये भी जानते हैं, फिर बात आएंगी पॉलिटिक्स की, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहूंगा यहाँ। हम देखते कि पिछले 30-40 सालों में गवर्नमेंट के जॉब धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। हमारे पास जॉब क्रिएट करने वाले जितने भी पीएसयूज थे, पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रेलवे, एयरफोर्स, शिपिंग, माइनिंग, बीएसएनएल, है ना, पोस्ट, ये क्या है, पीएसयूज है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के उद्योग थे। मोटार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे पीएसयूज हैं। हम देखते हैं कि हाल ही के दिनों में, हाल ही के सालों में धीरे 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 सारे पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन। एयर इंडिया के भी जो हमारे शान था, आज टाटा के पास है ना। एयर इंडिया खत्म हो गया मैडम, गवर्नमेंट का नहीं है अब एयर इंडिया। रेलवे में कितनी सारी वैकेंसी पड़ी है, रिक्रूटमेंट नहीं। जब पढ़ने वाले बच्चों को ये भरोसा नहीं रहेगा कि मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो पढ़ने नहीं आएगा। मैं थोड़ा आपको और थोड़ा डाइवर्ट करना चाहूंगी मैडम। जब देश आजाद बना तो ये सारे पीएसयूज बने, है ना, रेलवे, एयरफोर्स, ये वो जो। और मैडम इसमें बहुत सारे भर्तियां निकली, उसमें बहुत सारे रिक्रूटमेंट। और मैडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें रिजर्वेशन तो दिया है, लेकिन अगर ये पीएसयू ना होते ना मैडम, तो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रहता, रिक्रूटमेंट ही नहीं होती, रिजर्वेशन फॉलो ही नहीं। आई होप रेवरेंड जी यू अग्री विद मी। हमने नौकरी रिजर्वेशन 3-4 जगह मैडम, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में है, रिजर्वेशन नौकरी में है, रिजर्वेशन एजुकेशन में है। एम आई राइट? दीज आर द 3 प्लेसेस वेयर रिजर्वेशन इज फॉलोड। अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूला है। मैम नौकरी की बात करेंगे, हजारों नौकरियां निकली थी उस समय में, 60s में, 70s में। नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होते तो नेचुरली रिजर्वेशन में फॉलोड हो। तो उस समय में 60s में, 70s में पढ़ने वालों की एक उम्मीद थी, एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ पढ़ूंगा तो मुझे कोई ना कोई जॉब जरूर मिलेगी। पिछले 30-40 सालों में मैडम ये धीरे 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 चीजें खत्म हो गई। मान लीजिए कोई सेक्टर कोई सेक्टर प्राइवेट के हाथ में गया है, वो सबसे पहले अगर कोई काम करता है तो क्या करता है, नौकरियां खत्म करता है, लोगों को घर भेज देता है। क्योंकि उनके पास प्रॉफिट बनाने का एकमात्र हेड होता है नौकरियां कम। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा था कि हमारे आर्ट्स कॉमर्स साइंस में एम्प्लॉयबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। तो उसके चलते भी लोग मैडम पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन सब सरकारी फिगर कुछ अलग कहते हैं। देखो 4.33 करोड़ 21-22 में था, 4.46 करोड़ 22-23 में है, और 4.50 करोड़ 23-24 में है। अब हम कैसे कह सकते कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? एनरोलमेंट तो है, एनरोलमेंट तो बढ़ रहा है। फिर बात कहाँ आती है सर, कि जिस कॉलेजेस में, जिस कोर्सेस में हम पढ़ाते, शायद उन प्रोग्राम की एम्प्लॉयबिलिटी कम हो चुकी है, या फिर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमें दे तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो सर्विस सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग का, शायद आपका कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो नेचुरली मोस्ट ऑफ द पीपल हियर विल बी वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है मैडम। अब ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट होने लगी है। हमारे देश में बनने वाले हमारे देश में असेंबल होने वाले कंप्यूटर के 70% पार्ट चाइना से आते हैं आज भी, भले चाइना के साथ हमारे रिश्ते कैसे भी हो। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं, हमारा देश
मोटर कार का देखो, बहुत सारे हमें मोटर कंपनी दिखती है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। आपको पता है पिछले 3-4 सालों में 2 मोटर कंपनी यहाँ से अपना कारोबार खत्म कर दिया। सेल गाड़ी है, शेवरले, फोर्ड है, खत्म हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बंद है। तो कितने लोग बेकार हो चुके हो। मैं कहना ये चाह रहा था कि मैडम सर्विस सेक्टर में बहुत कम स्पेस होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में स्पेस ज्यादा होता है, ये आप कुछ समझ लें। एक स्कूल बना तो ज्यादा ज्यादा कितने जॉब बनेंगे, 10 बनेंगे, 20 बनेंगे, लेकिन एक कोई छोटे फैक्ट्री बनती है तो वहां कम से कम 50-100 लोग ही वहां लगे। सो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बनती है, सर्विस सेक्टर में कम बनती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से हमारा मैन्युफैक्चरिंग का चीजें धीरे धीरे कम है। मैं आपको सर्वे आपको बताऊं, हमारे देश में मारुति उद्योग, मारुति सुजुकी गाड़ी बोलते हैं ना, वो मारुति उद्योग मोटा उद्योग था जो कि सरकारी था। हिंदुस्तान की पहली सरकारी कंपनी थी वो कार बनाने वाली। संजय गांधी ने उसमें बहुत इंटरेस्ट लेके बनाया था। बाद में क्या हुआ सर, 90s के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज आ गए, उसमें से कुछ पार्ट हमने सुजुकी के दे दिया। कुछ साल तक उस गाड़ी का नाम मारुति सुजुकी हुआ करता था, अब सिर्फ सुजुकी आने लगा है इसमें। हमारे अब उसमें सिर्फ सुजुकी आने लगा है। आपको पता है 90s में हीरो होंडा गाड़ियां हुआ करती थी, मोटरसाइकिल, हीरो होंडा। अब क्या हुआ है, हीरो अलग बन गई, होंडा अलग बन गई। इंडो सुजुकी, कावासाकी बजाज, आपको याद है को थोड़ा सा ये 90s एंड 2000 का पीरियड। एक इंडियन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी आती थी, दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते। हीरो होंडा था, टीवीएस सुजुकी थी, बाद में आपकी इंडो सुजुकी थी, कावासाकी बजाज थी, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, हम सारी चीजें इंपोर्ट करने लगे हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, सर्विस सेक्टर कम हो गया। उसके चलते हमारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की, हमारे प्रोग्राम की एम्प्लॉयबिलिटी कम हो। फिर बात करते हैं, अब ये भी बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस। टू मच टेक्नोलॉजी हैज कम देयर सर, टू मच टेक्नोलॉजी। मैडम यू वर्क इन इंजीनियरिंग कॉलेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? आप मुझे शुरू से बताना वहां की एडमिशन प्रोसीजर क्या होती है। आप थोड़ा, आपका स्पीकर ऑन नहीं होता मैडम, ऐसे कैसे संभव है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, नहीं हो रहा शायद। आपका आपका माइक ऑन ऑफ वहां स्पीकर लोग करते हैं, वहां से लोकसभा की वजह से होता है वैसा। चलो कोई बात नहीं। सी व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस नाउ डेज। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसा संभव है मैडम कि बच्चा 12वीं पास हो गया, अपना मार्क्स मेमो लेके आ गया, टीसी लेके आ गया और आपने उसको एडमिशन दिए? इज इट पॉसिबल टुडे? हमारे समय में था सर, जब मैं 12वीं पास हुआ, एक मिनट, जब मैं 12वीं पास हुआ तो कुछ नहीं किया, मैंने अपने 12वीं के कॉलेज से मेरा ओरिजिनल मार्क्स मेमो लिया, लिविंग सर्टिफिकेट लिया, एक दूसरे डॉक्यूमेंट लिए, सीधा वो लेके गया डिग्री कॉलेज में, वहां फॉर्म भर दिया, एडमिशन हो गया। आज क्या है मैडम, आज किसी भी कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट देनी है आपको, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है, उसके पैसे भी ऑनलाइन भरने हैं। उसका एग्जाम भी बहुत सारे केसेस में ऑनलाइन होता है, उसका रिजल्ट भी ऑनलाइन लगता है, उसके लिस्ट भी ऑनलाइन लगती है, कॉलेज का ऑप्शन भी आपको ऑनलाइन देना है, कॉलेज को फीस भी आपको ऑनलाइन करना है, और आखिरी मौके पे आपको फिर वो डॉक्यूमेंट लेके उस कॉलेज में जाके एडमिशन वहां भी ऑनलाइन करना है। आपको लगता है कि सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे पेरेंट्स ये ऑनलाइन कर पाते हैं? यू आर वर्किंग देयर, यू नो मेनी स्टूडेंट कांट डू दैट। अगर आप में से मुझे कोई कह सकता है कि सर सारे बच्चे मोबाइल तो इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? सर मोबाइल इस्तेमाल करना एक बात है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना दूसरी बात है। आप कभी सर एक टेस्ट लेना बच्चे को, थोड़ा सा बच्चा पकड़ लेना है, थोड़ा सा
थोड़ा सा सोचो, जिसके हाथ में स्मार्टफोन, जो गूगल, जो व्हाट्सएप देखता हो, जो यूट्यूब देखता हो, जो फेसबुक इस्तेमाल कर, वैसा बच्चा पकड़ लेना थोड़ा सा, फेसबुक अकाउंट है क्या, यूट्यूब है क्या, और फिर उसको धीरे से पूछना, बेटा तेरा ईमेल आईडी क्या है। 100 में से 10-15 बच्चे सर खुद का ईमेल आईडी नहीं बता पाए। हालांकि हम जानते हैं कि विदाउट ईमेल आईडी दीज एप्लीकेशन कैन नॉट बी वर्क, है ना। गूगल का आपको एप्लीकेशन चलाने के लिए आपको ईमेल आईडी जरूरी है, फेसबुक को जो कुछ, मतलब वो मोबाइल तो चला लेते हैं मैडम, लेकिन वो ऑनलाइन डायरेक्शन नहीं कर पाएंगे। मैं कहना ये चाह रहा था कि नाउ डेज एडमिशन प्रोसेस ऑल्सो हैज बिकम रादर difficult, complicated, and as a result of that, listen that. And last thing here, that is want of appropriate student support mechanism. आज भी हमारे देश के उच्च शिक्षा में बच्चों को सपोर्ट सिस्टम ठीक से नहीं। एडमिशन कर लिया, हमारा उसका रिश्ता खत्म। हमारा रिश्ता क्या है, वो क्लास में आएगा तभी हम बात करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। लेकिन बच्चों की जरूरत है क्या है, वो एकेडमिक सपोर्ट चाहता है क्या, वो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहता है क्या, वो मेंटल सपोर्ट चाहता है क्या, बेटो काउंसलिंग, मेंटरमेंट स्कीम, दे आर वेरी नेसेसरी देयर। तीसरे इसमें आएंगे हम, ये एनईपी क्या सुझाव देती है गवर्नमेंट्स के लिए ताकि हम अपना डाइवर्सिटी को इंक्लूड कर सकें। द फर्स्ट थिंग एनईपी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट्स, सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट ऑल्सो, कि भाई earmark some fund for the education of SEDGs. SEDG, socio-economically disadvantaged groups. मैंने कहा ना, अगर हमारे देश में 30% बच्चे आ चुके तो 70% बच्चे बाहर हैं, और बहुत सारे लोगों के कारण सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल रीजन। अब इसमें गवर्नमेंट ही कुछ ना कुछ कर सकती है। तो ये पॉलिसी चाहती है कि सारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, खास इन लोगों की शिक्षा के लिए एक अलग से फंड देती। सेकंड थिंग, डेवलपिंग SEZ फॉर मोर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। मैंने कहा मैडम, आपने डिसएग्री नहीं किया कि बिहार में 1 लाख बच्चों के लिए 10 कॉलेजेस हैं, जो 21-22 का डेटा मुझे कहता हो सकता है कि थोड़ा उसमें इंप्रूवमेंट आया। इसका मतलब बिहार देश से रादर मोर पॉपुलेटेड स्टेट में सिर्फ 10 कॉलेज होना मतलब देयर इज ए नीड ऑफ मोर कॉलेजेस एंड मोर यूनिवर्सिटीज। तो ये पॉलिसी चाहती है कि ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करके हम उसको SEZ डिक्लेयर करें, स्पेशल एजुकेशनल जोन, और वहां ज्यादा कॉलेजेस बनाए, ज्यादा यूनिवर्सिटीज बनाए। और साथ ही पॉलिसी चाहती है कि प्राइवेट पार्टनर्स भी आए और वहां जाके यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बनाए। फिर हाँ, मैंने लैंग्वेज बैरियर की बात की, तो ये पॉलिसी कहती है कि अब हमें अपनी भाषाओं में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मैडम इंग्लिश कंपल्सरी ना रखें अब हम कहीं, उसके चलते अगर बच्चा पिछड़ रहा है या छूट ही रहा है हमसे, तो let us not make it compulsory. Those who want to study, let them allowed to study, and those who don't want to make it compulsory, let us not make it compulsory for him. अगर वो आगे जाके कहीं जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो वर्केबल इंग्लिश सीख लेगा। अब सुपरनोवा जैसा ऐप भी आ चुका है, उससे भी वो पढ़ लेगा, है ना। उसको यही हम ना रोके, इसलिए पॉलिसी कहती है कि हायर एजुकेशन मस्ट बी ऑफर्ड इन regional languages. And third thing, technology should be there, but for better participation. टेक्नोलॉजी टूल है मैडम, हमारा उद्देश्य नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। अगर कोई टेक्नोलॉजी हमें हमारे बच्चों को हमारे पास आने से रोकती है तो we don't want that technology. So technology tools must be there for better participation. This is what NEP expects from the government. Now, what NEP expects from us? We, the very prominent part of higher education sector. कॉलेज में हम टीचर प्रिंसिपल मैटर करते हैं,
मैनेजमेंट का वहाँ बच्चों से ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है, या गवर्नमेंट का ज्यादा कनेक्शन नहीं होता, वहाँ हम काम करने वाले होते हैं। तो एनईपी हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बेस्ट वे, जैसे कि का फर्स्ट थिंग इज देयर, मेक आईडीपी फॉर इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एसईडीजीज। आईडीपी, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, मेरे ख्याल से पिछले सेशन में मैडम इंग्रिड इसके बारे में कुछ कह रही थी। आईडीपी, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, उसमें ये टारगेट जरूर रखिए कि हमें मोर इंक्लूसिव बनना है। देन मेक एडमिशन प्रोसेस इजी एंड इंक्लूसिव। मैंने अभी अभी आपको गिनाया कि हाउ इट इज डिफिकल्ट, क्यों ना हम इसको आसान करें। सेकंड थिंग, सोशियो इमोशनल एंड एकेडमिक सपोर्ट फॉर मेंटरिंग। जैसे मैंने कहा, वी डोंट हैव अनफॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर स्टूडेंट। दिस पॉलिसी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड मी to develop such mechanism that no student feels himself or herself isolated or alone or helpless. So mentor-mentee scheme में है। Then develop bridge courses। जो बच्चे पिछले क्लास से आते हैं, एजुकेशनल जो जरा वीक है, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस चलाएं, उसके लिए ब्रिज कोर्सेज चलाएं ताकि उनको बाकी बच्चों के बराबरी में लाया जा सके। Develop more degrees in Indian languages, that is true, and we should follow bilingual mode of learning, bilingual mode of teaching. हम करते हैं, इसलिए चाहती है कि मैं जानता हूँ कि मैडम दीपा जी आपकी क्लास में सारे के सारे बच्चे इंग्लिश नहीं समझेंगे, आपको हिंदी में बोलना ही है, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो सिमिलरली दैट शुड बी फॉलोड एवरीवेयर। देन सेंसिटाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेस और जेंडर इशू। हाँ, जेंडर इश्यूज, रैगिंग, ऐसे मसलों पे बहुत अच्छा काम करना है। जैसे हम जानते हैं कि ये रेगुलेशन आया था, इसके चलते बहुत बवाल हो चुका था पिछले साल, आपको याद है नहीं? यूजीसी ने इसमें इंप्रूवमेंट लाया था, ये बिगड़ चुकी है। अब लेट मी कम टू द लास्ट पार्ट हियर। So far I talked about the status of inclusivity in our education. Then I talked about what are the reasons there of non-inclusion. And third thing I talked about was what NEP expects from the government and we higher education institutes. But apart from this, these are the problem, these are the challenges. अरे 5 मिनट के लिए आप कहाँ निकल गए मैडम? हाँ है, थैंक यू। अब 5 मिनट बचे, कहीं मत जाइए। Now, even if we address these issues are big problems. सबसे बड़ा मैडम इशू ये है एम्प्लॉयमेंट। जब तक बच्चों में हमें यकीन न दिला दे कि बेटा ये पढ़ो, आपको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, भले वो गवर्नमेंट जॉब ना हो, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तब तक हम बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकंड थिंग मैंने बताया कि हमारे पास ओबीसी का जीआर नहीं है मैडम, हमारे पास माइनॉरिटी का नहीं है, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, हमारे पास पीडब्ल्यूडी का नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पास उनका एग्जैक्ट फिगर ही नहीं है। मतलब हमारे पास यही डेटा नहीं है कि हमारे देश में कितने ओबीसी हैं। मुझे यही पता नहीं मैडम कि हमारे देश में कितने मुस्लिम्स हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने पीडब्ल्यूडी है, पता नहीं। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसके बारे में क्या करेंगे? मैडम मान लीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन रखना है, बड़ा फंक्शन, आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन आपको यही पता नहीं मैडम कि आपके कितने गेस्ट आने वाले हैं, उसमें वैरायटी क्या क्या रहेगी। मतलब मान लीजिए कि नॉनवेज लोग कितना खाएंगे, वेजिटेरियन कितना खाएंगे, शुगर वाले कितने, क्या कितने। अगर आपके पास ये डेटा ना रहा ना मैडम, तो आप उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। सेम इज ट्रू इन केस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। हमारे देश में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा ओबीसी है। कहा जाता है कि अबाउट मोर देन 60% पॉपुलेशन इज ओबीसी, 20% इज माइनर। अगर मैडम 80% या मान लीजिए 70% का डेटा हमारे पास नहीं है, तो हाउ वी आर गोइंग टू मेक एनी पॉलिसी एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग टू मेक देम पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन? दिस इज वन इशू। थर्ड थिंग मैडम, फाइनेंशियल कंसर्न। शायद मैंने कहा था इसमें नहीं चाहिए, इसमें नहीं ले आऊं मैंने। मैडम गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपना हाथ खींचना शुरू किया है।
Again, let me make it very clear. I am not targeting, I am not singling out any single government. मैं किसी एक सरकार के या किसी एक पार्टी के गवर्नमेंट को नहीं कह रहा हूँ. ओवर द इयर्स धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपना हाथ खींचना शुरू किया. सेंटर ने किया, स्टेट ने किया. अब हो क्या रहा है मैडम? अब प्राइवेट पार्टनर ज्यादा आएंगे. प्राइवेट पार्टनर ज्यादा आएंगे क्योंकि प्राइवेट, देखो आपके सिटी में कोई प्राइवेट कॉलेज बनता है, गवर्नमेंट को उसको कुछ नहीं देना है. वो खुद बिल्डिंग बनाएंगे, वो खुद आप रिक्रूटमेंट करेंगे, वो खुद फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैनेज करेंगे. गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट. और ऐसे हालात में प्राइवेट, मेकिंग प्राइवेटाइजेशन इज नॉट बैड, but the risk in the privatization that it becomes commercial. It excludes so many people. वहां गरीबों को कुछ मिलेगा, वहां रिजर्वेशन फॉलो नहीं किया जाएगा और वहां कमर्शियल एक्शन हो जाएगा. तो ऐसे हालात में गवर्नमेंट का फाइनेंशियल को हाथ पीछे करना, हाथ खींच लेना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है टू इंक्लूड दिस पीपल देयर. एंड द लास्ट थिंग लेट मी टेल यू मैडम, मैं और एक आपके साथ शेयर स्लाइड करूंगा. दूसरा एक कारण में से मैंने कहा कि हमारे देश में फॉरेन से बहुत कम लोग आते हैं. हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत कम बच्चे आते हैं. क्यों आते हैं? क्यों कम आते हैं? इतना बड़ा देश, 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, कितना पॉपुलेशन, कितना एनरोलमेंट है? 13 लाख समथिंग. 170 घंटे से सिर्फ 58,000 बच्चे हमारे पास आ रहे हैं. क्या कारण? Is it necessary to reconsider our policies? हमसे कुछ चूक हो रही है क्या? क्या लोग यहाँ ज्यादा अपने आप को सिक्योर समझते नहीं है क्या? इसलिए मैं चाहता हूँ कि गर्ल्स की बात हो, फॉरेन स्टूडेंट्स की बात हो, एंड नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट की बात हो, हमें उनके लिए थोड़ा सा सेफ, सिक्योर माहौल बनाना जरूरी है. दैट इज मिसिंग. आप बिहार से काम करती मैडम, मेरे ख्याल से आपका कुछ हिस्सा उड़ीसा को टच करता है क्या? साउथ बिहार उड़ीसा से टच करता है क्या आपको कुछ हिस्सा? आई एम नॉट श्योर. ज्योग्राफी की बात करूं तो शायद करता हो. एंड आपको याद होगा मैडम, वहां कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी नाम की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. हेलो, वहां एक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी नाम की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. वहां बहुत सारे बच्चे नेपाल से हैं. शायद पिछले फरवरी में घटित हुई घटना है 25 की. वहां एक बच्ची जो नेपाल से थी, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा परेशान कर. तो वहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे नेपाल से आते थे क्योंकि वो ट्रेडिशन मिली थी. एक जब बैच जाता था, दूसरी बैच आ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे नेपाल से थे. तो उस बच्ची ने सुसाइड किया तो उन सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया. तो उस मैनेजमेंट ने बिना कुछ चीजें जाने बिना उन सारे लोगों को रस्टिकेट कर दिया और उनसे कहा कि आप आज के आज हमारे हॉस्टल खाली करो. और इन सारे बच्चों को विदाउट एनी प्रोविजन रेलवे स्टेशन पे ला जाके डंप कर दिया. दिस इज ट्रू इंसिडेंट. हो सकता है इसमें कुछ चीजें मुझसे छूट रही हो. दिस इज ट्रू इंसिडेंट. और जब ये सोशल मीडिया पे बात चली, जब गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को इंटरव्यू करना पड़ा, तब उन बच्चों को फिर वापस लाया. मैं कहना ये चाह रहा था, अगर ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं फॉरेन स्टूडेंट के साथ, तो व्हाई विल फॉरेन स्टूडेंट्स कम टू अस? अगर कुछ चीज हम किसी मुस्लिम के बच्चे के साथ करते हैं, किसी लड़की के साथ करते हैं, किसी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के साथ करते हैं, तो दिस आर गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्टी. एक मैं लास्ट शेयर मुझे आपके साथ ये करने दीजिए. एक स्क्रीन आपको दिख रहा है मैडम? नया स्लाइड, हाँ या ना? यस सर. हाँ, नया स्लाइड. हाँ, अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था. हाँ, ये देख लेना. मैं फाइनेंशियल कंसर्न की बात कर रहा था मैडम. दीज आर द बजट फिगर्स फ्रॉम द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27. ये हमारा मैडम एजुकेशन का
एलोकेशन टोटल बजट में से, टोटल बजट में से हमारा ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का एलोकेशन जो कितना है 2.67, 2.64, 2.51, 2.59, 2.54, धीरे 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 ये कम हो रहा है। दूसरी चीज मैडम, ये करोड़ में है हमारे हायर एजुकेशन का शेयर। उसमें देखो ये था टोटल एजुकेशन का, ये था हायर एजुकेशन का। आप देख लेना मैडम, हायर एजुकेशन का शेयर टोटल बजट में कितना है 1.03, 0.98, 0.99, 0.9. Instead of growing investment in education, unfortunately we see that it is going down. ये देख लेना मैडम, ये हमारा टोटल बजट कंट्री का 26-27 का 53,47,315 करोड़, उसमें से एजुकेशन को कितना है मैडम 1,39,289 करोड़। ये कितना है टोटल बजट का 2.62। मैडम हमने 68 में तय किया था कि हम हमारे जीडीपी का 6% देंगे शिक्षा। Unfortunately, it is not taking place. And I mean to only say one thing, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा था आपसे कि these are the challenges. NEP के गोल बहुत अच्छे हैं, NEP अगर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं हम तो that will be wonderful thing, but we cannot turn blind toward the issue. So this is what I had to say now. Let me stop here. मेरे ख्याल से पूरे सेशन में मेरे साथ दिबा मैडम और रवि रंजन जी थे, बाकी लोग कहाँ गए पता नहीं गए। मेरे ख्याल से आपके साथ थोड़ी सी जबरदस्ती की गई इस कोर्स को करने के लिए। मिस्टर मैडम, एम आई राइट? आप लोगों के साथ ये कोर्स अटेंड करने के लिए जबरदस्ती की गई, अदरवाइज ये हालात न हो। अगर आप दिल से करना चाहते तो आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा होता, लेकिन आपको at the point of gun you are asked to attend the course. Anyway, thank you very much. This was from my side. If you have anything to add, anything to improve, anything to disagree, you are most welcome. अगर आप इसमें कुछ डिसएग्री भी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैडम मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कुछ तो कहिए, आवाज तो मैं आपकी सुन लूं। मैंने पूरे सेक्शन में किसी एक की आवाज सुनी है, यस सर नो सर, उसके सिवा मैंने किसी की आवाज नहीं सुनी है। मैडम दीपा जी तो अपने आप को अनम्यूट ही नहीं कर पा रही है, और लोकतंत्र में महिलाओं का आवाज नहीं आना ये बुरी बात है। चलो, एनीवे दिस इज व्हाट आई हैव टू से, और व्हाट आई हैड टू से। आई होप एवरीथिंग फेल फ्लैट। आप कुछ नहीं कहना चाह रहे, इसका ये दो ही अर्थ निकलते हैं। एक, मैंने जो कुछ भी कहा आपने पूरा समझ लिया, या फिर मैंने जो नहीं कहा वो भी आपने समझ लिया, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने जो कुछ भी कहा आपने कुछ नहीं समझा, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेकंड मोर। नहीं है ना दीपा मैडम? द पॉसिबिलिटी ऑफ सेकंड इज मोर देयर। एवरीथिंग फॉल फ्लैट, everything fell flat. Chalo. If nothing is there, let me stop the session now. Thank you, sir. Thank you so much. अरे सर, एक बार आप अपना कैमरा ओपन कीजिए, मुझे सिर्फ आपकी आवाज याद है, आपका चेहरा याद नहीं है। कभी तो अपना, हाँ, थैंक यू ठाकुर साहब ही है ना? हाँ हाँ सर। नाम इतना बड़ा है तो चेहरा दिखा नहीं है आप लोगों ने। ठाकुर साहब कहने में बहुत बड़ा बड़प्पन लगता है, शोले के ठाकुर साहब। हमारे विजय साहब का भी नाम ठाकुर साहब है, तो ठाकुर साहब बहुत बड़ा नाम है। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं। आप विजिबल रहते जाइए। Thank you, sir. Thank you. And with the kind consent of Professor Bedley, sir, I would like to declare that today's session will be over here. Thank you so much, sir. Thank you. Bye. Good night.